Hello and good evening. If you have any other 400-500 demands, please suggest that also. Class start करने से पहले ये कर दो वो कर दो. Relax कर लो यार थोड़ा सा. How are you all doing? I hope you're all good. I hope you can all see and hear me. Very good evening to all of you. Anyway, hope you can all see and hear. If you can see and hear, please write yes in the chat. Just write yes in the chat and we'll get started. It's always fun to read the chat, and I think as the prelims comes closer, this is something I've been experiencing for 2 years. Maybe it's also something I'll experience again this year. What happens is that the demands that people have, right, they keep elevating as the prelims comes closer. One, I'll just talk of the legitimate things first. The science and tech recorded class will be up by Sunday. That's what I had said also earlier, that I need 1 week to compile. There are too many articles of AI and emerging technology for me to make the class early, so I have to read all of them. So by Sunday, it will be up. Geography PYQs are left from step. I'll just upload on my website. Must have forgotten. But again, I'm just telling you that these demands are, never ending, and as the prelims comes closer rather, these demands will keep on increasing. But anyway, I will at least ensure that whatever I have committed to you, whatever has been committed throughout, whether in DPRP or step or foundation, whatever, I'll at least ensure that whatever I have committed, I will deliver. And so far, I think we're doing a decent job of it, right? Most of the things are delivered on time, and hopefully, more important than on time, I feel the delivery is more. It's more important to deliver with the adequate amount of quality, which I think is something that, at least in my opinion, we're able to do. Anyway, so today we are going to continue with our discussion on economy current affairs. So we were reading the WTO last time. In WTO, we had read two things so far: MFN status and the idea of national treatment. What we had not read is the types of economic integration. This is where we'll start with. Then the first principle of WTO was trade without discrimination. This we have seen. But iske alawa, there are some other principles. There are 4 other principles. This we'll see then. Once we understand this, then we look at the agreements under WTO. This will include, today we are going to look at trade-related intellectual property rights agreement, trade-related investment measures agreement, agreement on agriculture. These are the 3 major agreements we're going to be taking a look at. Of course, GATT we have already understood. GATS also will be taking a look at. This also will be understanding. So these are the 5 major agreements. We'll be discussing these 5 major agreements of the WTO. Once we discuss these 5 major agreements, the last agreement we'll discuss is the agreement on agriculture. From here, we'll move on to agriculture, which is then a discussion of sectors of the Indian economy. Right. So what I'm going to do today is going to give you a brief about agriculture. We'll see the broad framework of how agriculture has to be studied. वो broad framework देख के हमें ये समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर की कोई भी स्कीम आती है तो क्यों आती है, right? So एक broad overview we will take of Indian agriculture, and 2 topics we will study specifically today. These 2 topics are: one, the question of the minimum support price, very, very likely this year. 4 times it has been asked in mains, asked in prelims before today. And related to this topic is the idea of PDS and National Food Security Act, also in the news, because India's food subsidy bill has gone down because of discontinuation of one government scheme, which I taught you in the budget and I will not repeat now. But this is also something we will see, the PDS and NFSA and how this system actually works, right? इसके बाद आपको बजट के लेक्चर में अगर उस दिन वो चीज समझ नहीं आई थी तो आज पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा. So this is what we have to cover today. After this, in next class, which is going to be on Saturday, we are going to look at other sectors of the economy, other things in agriculture. Of course, agriculture काफी बड़ा है, agriculture की बाकी चीजें, some discussion on other sectors of the economy like industry and services, but वो उतना important है नहीं, उसमें जो है भी वो economic survey में cover हो जाएगा. And we'll also be looking at some payment technologies which we have not seen yet, things like UPI, CBDC, Bitcoin,
etc., etc., right? So we're going to be looking at all of that, and this will complete our first portion of these current affairs classes, and then next week we're going to look at all the articles that have come in the newspaper. Anyway, so let's get started. I hope all of this is clear. यहाँ तक आपको याद है, last time हम यहाँ तक कर चुके हैं. Hope you remember all of this. Then I'll get started with types of economic integration. I hope आपको याद हो, हमने यहाँ तक पहले देख लिया था, WTO पढ़ रहे थे हम, IMF वगैरह कर चुके थे. Good. आज की क्लास के एंड में just one more thing that I forgot to write here. At the end of today's class, there's going to be a test of 14 MCQs. ठीक है, so you can maximum get 28 marks here. Cut off is going to be 25 marks. चलो थोड़ी सी दया खा लेते हैं. 24 marks. 24 marks का cut off होगा. This is the test we're going to do at the end of today's class. All of them are UPSC PYQs only. So I have not made them myself. बिल्कुल जैसे LMS चलता है, जैसे हम टेस्ट अभी तक करते हैं वैसे ही हम टेस्ट करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. तो हम यहाँ पर थे, लास्ट टाइम के नोट्स हैं ये. वी वर स्टडिंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट? वी हैड लेफ्ट last time. The last topic we had discussed was the first principle of WTO. The first principle of WTO was trade without discrimination. In this, there are two other principles. One is most favored nation status and one is national treatment. Most favored nation status basically meant that you will not discriminate against anybody. All nations are most favored nation. This was the idea under MFN status. MFN में आगे देखा गया था, there are certain exceptions to this rule. One of those exceptions was preferential trade agreement and free trade agreement. Now, how are these exceptions? ये exceptions कैसे हैं to this rule? This is what we have to see. अब economic integration क्या है, ये हमने देख लिया था. So now what we are trying to understand is कि what is the meaning of the word PTA. आपने सुने होंगे ये words. Preferential trade agreement का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कस्टम्स यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन मार्केट का मतलब क्या होता है. These words, what are the differences and meanings of these words? This is what we have to understand. देखो, basic level of economic integration, the most basic level is that you give everyone MFN status, कि आप differentiate ना करो, आप discriminate ना करो, right? So let's say India gives, there are 5 trading partners, I'll write here: USA, China, UAE, Japan, and let's say Singapore. ठीक है, there are 5 trading partners that India has at the moment. India gives all of them equal status, all of them MFN status, does not discriminate with anyone. That is basic level of economic integration. अब इसके आगे इंटीग्रेशन कैसे होती है वो देखते हैं. First type of integration can be preferential trade agreement. So India signs an agreement with, let's say, USA. That India and USA agree that on certain types of goods, so they will mention, let's say goods I mentioned here are motorcycles, digital boards, iPhones. On certain goods between these two countries, the tariff requirement will be, let's say, 5%. So India is giving preferential treatment to USA, but this is allowed. Because it's a PTA, this is allowed, this agreement is allowed. Why is it allowed? Because this is a stepping stone to the entire world getting connected through free trade. ये बात हमने last time समझी थी, है ना? तो इंडिया और यूएसए ने एक अग्रीमेंट कर लिया कि हम मोटरसाइकिल्स अगर ट्रेड करेंगे, we will have a tariff of 5%. अब अगर दुनिया से कहीं से भी आ रही है मोटरसाइकिल, सिंगापुर से मोटरसाइकिल आ रही है, जापान से आ रही है, यूएई से आ रही है, चाइना से आ रही है, all 4 of these have an import duty of 10%. But American motorcycles coming to India because of this agreement is tariff is 5%. तो यहाँ जो tariff लग रहा है वो 5% लग रहा है, right? So now India is more integrated with USA as compared to rest of the world. This is the first level of economic integration, a preferential trade agreement, right? So trade agreement for preferential access to certain products to participating countries. अब इसमें कुछ products mentioned होंगे. It is only on that product that this terms of preferential trading agreement will apply.
ऐसा नहीं कि आपने हर प्रोडक्ट पे 5% कर दी, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा था मोटरसाइकिल्स एंड आईफोन्स, so certain products will be mentioned. Example है India Nepal and India Mercosur preferential trading agreement. Now what is Mercosur? This you need to know. Up. Second stage of this economic integration is free trade agreement. Free trade agreement. What is free here? Free is freedom, free from barriers, free from barriers. This type of trade. So India can sign an agreement, let's say with UAE, that okay, we are going to trade without barriers. So when India trades now with UAE, India is going to say that there is going to be no tariff from UAE if there is any trade of, let's say, motorcycles. तो अब इंडिया ने यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया कि अगर हम यूएई से ट्रेड करेंगे तो देयर विल बी नो बैरियर्स, नो ट्रेड बैरियर, नो टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, नो टैरिफ विल बी एम्प्लॉयड ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम. मेंशन करना पड़ेगा कौन से आइटम की बात हो रही है. दिस इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. So this leads to formation of a free trade area where you reduce your trade barriers and you say that there is going to be no tariff. For example, India has a free trade agreement with Thailand. अब न्यूज में क्यों था ये? Maldives is finalizing a free trade agreement with China. India and EU have been negotiating a free trade agreement since a very long time. And it is expected कि 2025 में there will be some progress, although बहुत टाइम से यहाँ पे progress नहीं हुई है. Now understand what this free trade agreement means. इसके लिए ये समझने के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी कंट्री टैरिफ क्यों लगाती है, right? Did I explain this logic? I think I explained this logic to you last time, right? Why does any country put a tariff at all? कोई भी कंट्री टैरिफ क्यों लगाती है? Tariff is put to protect your nascent industry. But otherwise, free trade is better because it leads to optimum utilization of factors of production, leads to allocative efficiency of resources. ये चीज हमने last time करी थी ना? I've told you the logic behind this, right? Okay. So now, any two countries when they go for a free trade agreement, let's say India और EU का free trade agreement हो रहा है, तो पहले तो इस agreement में जो भी goods mentioned होंगे, only the goods that are mentioned, they will be subjected to no tariff or no customs duty. कोई tariff नहीं लगेगा, कोई customs duty नहीं लगेगी. Now, India and EU have been negotiating a free trade agreement since a very long time. Since a very long time, they've been negotiating a free trade agreement. Why? India says that in this free trade agreement, you need to put the which goods. देखो, दोनों are agreed के free trade agreement तो होना चाहिए. कौन से goods इस free trade agreement में आने चाहिए, इस पे झगड़ा है. India says put agricultural products here. Because India's agricultural products are much cheaper than that of EU. If we put agricultural products in this free trade agreement, no tariff is put on Indian goods, then they will be able to enter the European market, and European domestic market of agriculture will crash because Indian goods are much cheaper. Europe says that you need to put luxury cars here. Luxury cars का एग्जांपल लेके आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होगा. If luxury cars are put, then Indian automobile industry might be facing a lot of problem because European cars, even now German cars are considered better, like Mercedes, BMW, etc. These are all German, so they will be considered better, right? तो ये भी एक कहानी है, right? So this is why there has not been a free trade agreement between India and the EU till now, but they have been negotiating. India ये कहता है, वो ये कहते हैं, right? But if you have a free trade agreement, then at least for these goods, there is no customs duty, no tariff barrier, right? अब इसके आगे कैसे आप इंटीग्रेट हो सकते हो इकोनॉमिकली, वो देखते हैं, राइट? अब बात करते हैं कस्टम्स यूनियन.
कस्टम्स यूनियन। लेट्स से अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा था सिंगापुर, है ना। सिंगापुर इज अ पार्ट ऑफ आसियान। This is ASEAN. ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. There are 10 countries here. इनका आपस में these 10 countries, sorry about that, these 10 countries have free trade agreement with each other, right? तो अब क्या है, जैसे let's say this is Singapore, Malaysia, Indonesia, this is Myanmar, Brunei, etc., Vietnam, right? Laos, Cambodia, these are countries of ASEAN. Now, India has, let's say, free trade agreement with Thailand. Thailand is also part of this group. India has free trade agreement with Thailand. Okay. But India does not have free trade agreement with, let's say, Malaysia. With Malaysia, India does not have free trade agreement, and with Malaysia, India says that on this trade, we will put 10% tariff. Now, एक मिनट लगा के सोच के बताना, if this is the case, and all ASEAN countries, जितनी भी white में लिखी हैं, they have free trade agreement with each other. So, Thailand and Malaysia, they have free trade agreement. यहां पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी. So, if a 100 rupee pen comes from Thailand to India, it will be sold in India for 100 rupees. If 100 rupee pen comes from Malaysia to India, it will be sold in India at 110 rupees. 10% custom duty लग जाएगी. Custom duty कब लगती है? What is the event of taxation and custom duty? Change of international border. अब now in this case, what is going to happen? इकोनॉमिकली सोच के बताओ, सारी कंडीशंस क्लियर हैं. इंडिया थाईलैंड, दोबारा बता देता हूं, इंडिया थाईलैंड हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थाईलैंड मलेशिया हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मलेशिया एंड इंडिया डोंट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 10% tariff is there. अब what is going to happen now? Any businessman in Malaysia who wants to sell their products to India, they will first send them to Thailand, open another company here, or have a business partner with this person, with somebody who is in Thailand, then from Thailand trade with India. Right? So all of the trade will now get diverted here. Right? All of this trade, कोई भी थाईलैंड, आप थाईलैंड के एक बिजनेसमैन हो, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि यार मेरे को अपने गुड्स इंडिया में भेजने हैं, पहले मैं थाईलैंड भेजता हूं और थाईलैंड भेजने के बाद मैं इंडिया भेज दूंगा. मेरे को यहां पर थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, मे बी 100 रुपीज का पेन मेरा 101 रुपीज का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वट एवर, बट एटलीस्ट टैरिफ तो नहीं लग रहा. राइट? नाउ दिस डज नॉट मेक सेंस. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग दिस टैरिफ ड्यूटी देन? So then what these countries will do, these ASEAN countries, what they will do is, ये सारी ASEAN countries हैं, they will face this situation multiple times. So they will say that let us make a union where we will put customs duties together. तो सारी ASEAN countries क्या कहेंगी कि हम एक यूनियन बना लेते हैं और सारी customs duties, जो भी custom duty लगानी है, हम सारी साथ में लगाएंगे. So all these ASEAN countries, every single ASEAन countries, let's say there are 10 countries, ये एक ऐसे यूनियन बना लेंगी and कहेंगी that any good that is entering ASEAN will be subjected to customs duty when it's crossing this line, not the national border, but this line which is surrounding all ASEAN countries. तो अब ASEAN की किसी एक कंट्री के साथ भी अगर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो इफेक्टिवली योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज नाउ विद ऑल ASEAN countries. समझ आ रही है बात? उन्होंने कस्टम ड्यूटी का, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? कस्टम्स ड्यूटी कहां लगती है? व्हाट इज द इवेंट ऑफ टैक्सेशन ऑन कस्टम्स ड्यूटी? चेंज ऑफ बॉर्डर. तो यहां पर इन दिस केस अगर इंडिया मलेशिया कोई गुड भेजता तो कस्टम ड्यूटी कहां लगती? जब वो मलेशिया का बॉर्डर क्रॉस करता. अब इन ASEAN कंट्रीज ने क्या कहा कि जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ कस्टम्स ड्यूटी,
just for purposes of customs duty, all of us ASEAN countries, हम सारी ASEAN countries what we'll do is कि सिर्फ custom duty के purpose के लिए we all have a common border. तो अगर हमें कस्टम ड्यूटी लगानी है, अब चाहे वो आसियान में मलेशिया आ रहा हो, थाईलैंड आ रहा हो, म्यांमार आ रहा हो, कंबोडिया आ रहा हो, लाओस आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, the moment it crosses this border that this is hypothetical, this border does not exist, एक ऐसा उन्होंने लाइन खींच दी है, इसको क्रॉस करते ही आसियान में आप किसी भी कंट्री पे आओ, it will be treated as this border will be treated as the point for customs duty. Basically for economic purposes, for customs purposes, they are one united country. ये एक ही कंट्री मान रहे हैं खुद को for customs purposes कि सब कस्टम ड्यूटी साथ में लगाएंगे. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो सब साथ में करेंगे. अगर मान लो उन्हें इंडिया की कस्टम ड्यूटी 0 करनी है, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो सबके साथ होगा, एक के साथ नहीं हो सकता, राइट? अगर इंडिया के साथ कोई भी ड्यूटी लगानी है, 10% ड्यूटी लगानी है, तो सब लगाएंगे, कोई एक नहीं लगा सकता. सो फॉर द पर्पसेस ऑफ कस्टम ड्यूटी, 0 कस्टम ड्यूटी मींस फ्री ट्रेड, और 10% कस्टम ड्यूटी, प्रेफरेंशियल ट्रेड, किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटी का कोई भी अरेंजमेंट होगा, we are all together and we will negotiate it together. This is called united for the purposes of customs or customs union. समझ आ रही है ये बात? ये चीज समझ आया कॉन्सेप्ट? कस्टम्स यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ आया? जैसे सिंपल सी आपको अभी बोर्ड पे ही लिखा था मैंने कि इंडिया और ईयू का एफटीए हो गया, that India and EU are negotiating an FTA. EU is not one country, right? EU has many members, but they are a customs union. अगर आपने पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, इनके कस्टम्स यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो अब आप चाहे अपना गुड स्पेन भेजो, चाहे फ्रांस भेजो, चाहे जर्मनी भेजो, तीनों जगह ही आपको 0% टैरिफ लगेगा, बिकॉज दे आर ऑल पुटिंग देयर कस्टम ड्यूटीज टुगेदर. दे आर यूनाइटेड एज फार एज देयर कस्टम्स ड्यूटीज आर कंसिडर्ड. अब ऑब्वियसली दिस इज मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ये और एक लेवल आगे जाके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है कि सबके साथ हम नेगोशिएट भी साथ में करेंगे. कि इंडिया ने पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मान लो बांग्लादेश के साथ, अब इंडिया बांग्लादेश कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के साथ हम साथ में नेगोशिएट करेंगे. दिस इज वन लेवल हायर, कस्टम्स यूनियन. देन देयर इज कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट, अभी तक जितनी भी ट्रेड की बात हो रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी बात हो रही थी, इट वॉज ट्रेड इन गुड्स, नॉट ट्रेड इन सर्विसेज. सर्विसेज की बात नहीं हो रही थी. अब कॉमन मार्केट जरा जैसे इसकी बात करेंगे, इसमें क्या कहेंगे कि नाउ लेट्स से दीज कंट्रीज ऑफ आसियान, ये एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल पे सारे वो बनाते हैं. दीज आर 10 कंट्रीज ऑफ आसियान. आपस में इनका पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था. फर्स्ट दे हैड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईच अदर. सेकंड व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड अ कस्टम्स यूनियन कि दुनिया के साथ नेगोशिएट करेंगे तो साथ में करेंगे, किसी के साथ भी कस्टम्स यूनियन बनाएंगे, किसी के साथ भी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो साथ में लगाएंगे. सो अ कस्टम्स यूनियन बिटवीन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज. बट दिस इज सो फार ओनली फॉर गुड्स ट्रेड, नॉट सर्विसेज ट्रेड. ये गुड्स ट्रेड के लिए. नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या कहा, दैट वी विल कंसिडर ईच अदर और वी विल कंसिडर ईच अदर्स टेरिटरी अ कॉमन मार्केट. तो चाहे गुड्स ट्रेड हो चाहे सर्विसेज ट्रेड हो, हमारे आपस में कोई बैरियर्स नहीं रहेंगे. अब सर्विसेज ट्रेड में क्या कहानी है, दैट इवन मूवमेंट ऑफ पीपल विल बी अलाउड. सर्विसेज का ट्रेड कैसे होगा, जैसे मान लो डॉक्टर हैं, ही इज ऑफरिंग मेडिकल सर्विसेज, तो अ डॉक्टर फ्रॉम मलेशिया कैन गो टू थाईलैंड, ऑफर सर्विसेज देयर एंड कम बैक, बिकॉज इट इज वन मार्केट. कोई बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सबका मार्केट सेम है. इट इज ओनली वन मार्केट. इट द Malaysian healthcare market and the Thailand healthcare market and the Singaporean healthcare market are not seen separately. They are one market. So the factors of supply and demand operate together. समझ आ रही है बात? तो यहां से मान लो कोई जाए, वो सीधा जाके you can travel, there is free movement of people, free movement of capital. जैसे इंडिया में, जैसे हम इंडिया में माने कि इंडिया is one market. If today I want to offer services in Madhya Pradesh as a doctor, or in Bihar, or in Northeast, or in South India, or in Jammu and Kashmir,
मैं कहीं भी जा सकता हूँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट? एंड कहीं मुझे कस्टम्स ड्यूटी, कहीं टैरिफ तो नहीं देना पड़ेगा. इट इज वन कंट्री, इट इज वन इंटेग्रल इंडिया, एंड उस इंटीग्रेटेड इंटेग्रल इंडिया में मैं कहीं भी जाऊं. ये सेम चीज इन्होंने अपनी कंट्रीज में अप्लाई कर ली. दैट इफ समबडी इज इन थाईलैंड, जैसे मैं अभी चाहूं तो बिहार जाके मेडिकल सर्विसेज दे सकता हूं, तो आप थाईलैंड में हो, आप जाके मलेशिया जाके मेडिकल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, सिंगापुर जाके मेडिकल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो. तो देयर इज फ्री मूवमेंट. So not only allows trade in goods, but also trade in services, movement of people, businesses, capital. जो हम इंडियन स्टेट्स में सोचते हैं कि हम, मैं चाहे अपना बिजनेस कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन एज अ पर्सन मूव एनीवेयर एंड गिव सर्विसेज. वो चीज क्यों है? क्योंकि इंडिया एक कॉमन मार्केट है. सो दे हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ कॉमन मार्केट नाउ. ASEAN is not the example for this. मैं आपको बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ to so that we can elucidate the concept properly. So people can move, businesses can move, capital can move. This would be the idea of a common market. So not only goods, but also services can move together, known as common market. Now this is even greater stage of economic integration. Customs union is for goods trade. Services, समझ आ रही है ये बात? Is this clear? Okay. Up. So we know what customs union is. Customs union simply means that they will negotiate with the rest of the world together. आपस में 99.9%, actually in all customs unions in the world, these countries within themselves will have a free trade agreement, but this is not necessary. Right? This customs union just means that we are united for putting customs for goods trade. Common market means that services, maybe we will freely allow movement of goods and services. Not only goods, but also services can move freely. Then, if you have both customs union and common market, अगर ये दोनों साथ में हैं, that you will negotiate with the rest of the world together also, and you can have a free movement of people also. If both these things are there, then this is called an economic union. That these are four countries, with the rest of the world they put custom duties together, and amongst themselves they are one market. तो आप देखो ये एक कंट्री से अलग कैसे है. इंडिया भी तो ऐसे ही करता है. India is one market, all states together are one market, and to the rest of the world we put custom duty together. तो ये तो पूरी इकोनॉमिक यूनियन हो गई जो एक कंट्री की होती है as far as foreign trade is considered. तो ये नेक्स्ट स्टेप है इकोनॉमिक यूनियन. समझ आ रही है बात? इकोनॉमिक यूनियन में क्या दो चीजें हैं कि एक तो दुनिया से जितने भी गुड्स आएंगे, दुनिया मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी गुड्स आएंगे, उस पे वील पुट कस्टम्स ड्यूटी टुगेदर एंड वी हैव अ कॉमन मार्केट. आपस में ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेड इज फ्रीली अलाउड, जैसे इंडियन स्टेट्स हैं. दिस इज इकोनॉमिक यूनियन. इज दिस क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. So preferential trade agreement, then free trade agreement, then customs union, common market, then lastly economic union. अब इसके आगे देखते हैं. Now let's say that ये जो कुछ कंट्रीज थी, इन कंट्रीज ने अब क्या डिसाइड किया that आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपस में तो दे आर नाउ कॉमन मार्केट ओनली. पूरी दुनिया के साथ they will put customs duty together, so they are a customs union also. Next step they decided is that we will have a common currency. If they have a common currency, whose job is it to manage the currency? Managing currency is job of central bank. If they have a common currency, they are going to have a common central bank. जैसे the countries of Europe, there are, Europe as an example of many things. So Europe में there is a union, a customs union in the form of European Union. There is a common market also called Schengen area. There is a common currency area also called the Eurozone. Not all countries of Europe have euro as their currency. जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड की करेंसी की बात करो
तो स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, इट्स नॉट यूरो, राइट? सो यूरोजोन is those countries that have euro as their currency. So Greece, Italy, Spain, France, Germany, all of these have euro as their currency. If there is going to be one currency, then all of them are going to have one central bank, one place where the notes are issued. उसकी ब्रांचेस आप कितनी बना लो, बट अगर एक ही करेंसी है तो डिसीजंस तो साथ नहीं होने पड़ेंगे ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. सो दे विल हैव अ कॉमन सेंट्रल बैंक. इसका एग्जांपल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक. And this is called monetary and economic union. So economic union तो थे ही ये पहले से, they were already a economic union, customs union and common market. Now they have decided common currency, so now they become economic and monetary union. इसका example है eurozone. So economic union with a common currency. So they will have a common central bank. इसका example है European Central Bank, है ना? अब what is the last thing that is left that is now separate between these countries? ऐसा क्या है जो अब इन कंट्रीज में सेम नहीं है? What is the thing that is not there in these countries now? अब like only government, है ना? सिर्फ गवर्नमेंट अलग है. तो लास्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन is you have a common government. When you have common government, you will have fiscal policy also being same. अभी monetary policy तो same हो ही गई. If there is one central bank, there is going to be one monetary policy for this entire region because they have a common currency. But still, fiscal policy is going to be different. Budgeting, taxation is going to be different. Fiscal policy को भी अगर same बनाना है, you need to have common government. Then fiscal policy is also same, and this is exactly what a country is. Then you become one country. You have common government, common fiscal policy, common monetary policy, one common currency. No, with the rest of the world you negotiate together, and amongst your states you can move freely, so you become one country effectively. So this is the idea of various stages of economic integration. एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं just for clarity. We started with preferential trade agreement, then moved on to free trade agreement. Then there are two things actually. There is a customs union and there is a common market. Customs union and common market together would mean economic union. Economic union plus common currency would mean economic and monetary union. And then if you also want to have common government and common fiscal policy, so this is complete political and economic integration. ये चीज समझ आई इंटीग्रेशन का साइन है वर्ड में? समझ आ गया ये? These various stages are now clear. देखो यूएसए इज अ कंट्री, ठीक है, तो यूएसए को इसमें इंक्लूड नहीं करते. Somebody is asking how would eurozone counter inflation as independent countries? They can't. Supply side measures पे maybe. They are a common market. एक ही मार्केट है यार पूरा यूरोजोन, and they have a common currency. पूरे यूरोप की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक ही जगह डिसाइड हो रही है. इट्स लाइक आस्किंग हाउ कैन हरियाणा काउंटर इन्फ्लेशन? हरियाणा कांट काउंटर इन्फ्लेशन. RBI can counter inflation for Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, everyone together. Similarly, they have decided to have a common currency. जब करेंसी एक जगह पे बन रही है तो एक ही जगह पे इन्फ्लेशन काउंटर होगी. यूएसए इज अ कंट्री, तो यूएसए की बात नहीं करते. यूके वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. यूके वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नॉट पार्ट ऑफ यूरोजोन. तो यूके करेंसी, यूके की जो करेंसी, यूके वॉज पार्ट ऑफ ईयू बट यूके वॉज नॉट पार्ट ऑफ यूरोजोन. यूके की करेंसी हमेशा से ही पाउंड स्टर्लिंग थी. आफ्टर ब्रेक्सिट, UK has now left the European Union.
So now their negotiations with the European Union are separate. Now, we were reading these principles of World Trade Organization. In these principles, we have firstly read trade without discrimination. This was first principle. इसमें दो चीजें हमने पढ़ी, MFN and national treatment. These two we have understood. बाकी चार आसान हैं. अब ये बाकी चार जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं. ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तो हमने पढ़ लिया था, राइट? ये भी हमने देखा था, बाय फ्री ट्रेड. अच्छा, वी हैव डन दिस, नो? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये देखो, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने देखा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. नेशनल ट्रीटमेंट, इसकी क्या कंडीशंस हैं, ये हमने देखी थी कि यू हैव टू ट्रीट ऑल गुड्स फेयरली. दिस इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल. लेट्स नाउ मूव टू प्रिंसिपल नंबर 2, फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन. इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? देखो, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल. ये प्रिंसिपल कहता है दैट थ्रू नेगोशिएशंस, various negotiations over time, gradually, all countries of WTO agree that free trade is what is our final goal. बस इतनी सी बात है कि हम अग्री करते हैं कि हमारा फाइनल गोल फ्री ट्रेड है. अल्टीमेटली वी विल गो फॉर फ्री ट्रेड. सिंपल सी बात. दैट्स ऑल, दैट्स रिटन हियर, राइट? तो 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं WTO में. आज भी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ये 2001 की नेगोशिएशन आज तक पूरी नहीं हुई है. अभी तक इसी पे डिस्कशन चल रहा है. क्यों चल रहा है मैं बता दूंगा अभी आपको, को भी समझ आ जाएगा व्हाई इट्स लाइक दिस. 8 rounds of negotiations have happened. Initially the focus was only on tariff barriers. Now even non-tariff barriers are being considered. This is the idea. But non-tariff barriers भी अभी हम समझेंगे. The idea here is that ultimately we want free trade. This is our final goal. Gradually through negotiations everybody agrees कि अल्टीमेटली फ्री ट्रेड आना चाहिए. दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी देखते हैं. लेट्स लुक एट थर्ड प्रिंसिपल, फिर आएंगे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स पे. थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. इसका क्या मतलब है? यू हैव अग्रीड दैट फ्री ट्रेड इज व्हाट यू वांट. ठीक है, आपने मान लिया है कि आप फ्री ट्रेड चाहते हो, फ्री ट्रेड इज बेस्ट फॉर द वर्ल्ड, बट यू have to give certain binding commitments. आप खुद दे दो, चाहे कि इंडिया कहे जैसे फॉर एग्जांपल that today our tariff is 40%. In 10 years we will make this 30%. In 10 years we will make this 20%. In 10 years we'll make this 10%. And after 10 years we'll make it 0. So now there is a predictable path. You can see how India is going to reduce its tariff. पहले इतना था, then we come to this point, then this point, then this point, then this point, right? तो ये है कहानी, that over time you reduce this. So it should be predictable through binding transparency. तो आप ट्रांसपेरेंटली बताओ that okay, right now we have these many tariffs, हम over time इनको कम करेंगे, and you then follow your binded commitments. You are bound to then these commitments and you follow them, so that eventually we know that we are heading towards a free trade world. So principle 2 and 3, as you can understand, are connected to each other. Principle 2 is free trade gradually through negotiations, and principle 3 is predictability through binding and transparency. So first 3 principles, first one being trade without discrimination, most favored nation status and national treatment. Second principle being eventually all will settle on free trade through negotiation. Yes. And third, that you will declare your commitments transparently and bind to your commitments for free trade. So जो पहले 3 principles हैं ये free trade के लिए हैं, right? Now why do we not have free trade? Because there are barriers to trade. There are barriers in trading. Now how do these barriers exist? इन दोनों बैरियर्स की बात करते हैं. These are tariff and non-tariff barriers. One barrier to trade is tariff barrier. Tariff barrier is India says if goods are coming from China, we will put a 10% custom duty. तो अब customs duty अगर लगेगी चाइना में, अगर 100 रुपए की कोई चीज बनेगी तो इंडिया में it will be available for 110 rupees. This is a barrier to trade. It's a barrier to free trade.
right? Customs duty is making it difficult for the Chinese to now sell their goods to India. But this is an objective barrier. 10% दिख रहा है मुझे tariff barrier है. What is non-tariff barrier? Barrier is anything that makes free trade difficult. One way of making free trade difficult is you put a tariff. The other way is कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बना दो जिसकी वजह से फ्री ट्रेड ना हो पाए. आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो, but you are making a policy. For example, India makes a policy that when Chinese goods arrive at Indian shores or at Indian ports, every single good, every single consignment will be opened, checked, scanned, closed, and then be passed on. But India makes a rule that if these are coming from, let's say, Japan to Indian ports, तब ऐसी कोई policy नहीं है. Japanese goods will be allowed. Okay, of course, some basic scanning and consignment checking will happen. That's the job of the IRS customs. That will happen, but yes, they will be allowed to pass. But if Chinese goods come to Indian ports, we will check every single box, open every single box, check every single box, see what is inside it, then we will let it pass. Tariff दोनों पे नहीं है. No tariff on either. If you are now a Indian importer, आप एक Indian importer हो, ठीक है, आपको पता है Japanese goods are expensive, Chinese goods are cheaper. You will still buy from the Japanese. Why? Because there is certainty here. It is certain that your money will come to you. In this case, इस case में it is not certain, right? Because हर consignment को check करना है, every good will be opened and checked. It's not certain that the goods that you have will come to you. Even though you are paying more money here, you will buy the Japanese good. This is a non-tariff barrier, right? जैसे आप कहो, and very famous case this is with regards to EU. The European Union was supposed to import Alfonso mangoes from India. They did not put a tariff, but they rejected the whole consignment. On what logic? They said that there was a fruit fly infestation. अब क्या हुआ था यहाँ पे actually? On one mango एक मक्खी बैठी हुई थी. And they said this entire consignment, tons and tons of mangoes, they said they are infested with a fruit fly, and therefore we will not accept them because these are not hygienic imports, right? अब ये क्या है? This is again a non-tariff barrier. आपने tariff नहीं लगाया है, but you are not allowing for free trade. समझ आया non-tariff और tariff barrier का meaning? Both these terms are clear to you? Tariff and non-tariff barrier. ठीक. अब देखो, if you want free trade, and that is the WTO's job, WTO wants के world में free trade हो, over time these tariff barriers and these non-tariff barriers, all of them have to be removed. Ultimately WTO चाहता है कि ये दोनों barriers remove. अब ये जो केस है अल्फोंसो मैंगोज कमिंग टू EU, इसके लिए मैंने आपको एक अग्रीमेंट पढ़ाया था लास्ट टाइम, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. अभी बात करेंगे इसकी. दिस अग्रीमेंट टॉक्स अबाउट हाउ hygiene standards have to be put for agricultural produce when it has to move across countries, right? So there is a WTO agreement called Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, which talks about the rights that the members have for ensuring. Sanitary basically means hygiene, and phytosanitary plant hygiene and other hygiene measures that you can put on trade on agricultural produce. तो इस agreement को साइट करते हुए EU ने हमारे consignment को reject किया था. But this agreement talks about harmonization of standards. Some international standards will be used.
there will be certain international standards. You can't say कि आपका मन है, you can't say कि मेरा मन है कि मेरे को ये अनहाइजीनिक लग रहा है तो मैं इस कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता. There has to be some international standards, right? And you cannot use sanitary phytosanitary measures for unjustified cases. This was a complete unjustified case. यहाँ पे लिखा हुआ है EU's import ban on Alfonso mangoes comes into force. Completely unjustified. क्यों हुआ था वो भी आपको आज ही समझ आएगा. आज आपको थोड़ा ये भी समझ आएगा डिप्लोमेसी कैसे होती है, right? But let's just wait for this is a very interesting story, but let's just wait for the story to end. ठीक है. This is the agreement that prevents such unjustified measures and says that okay, if you have to have agricultural import, तो आप कुछ hygiene के standards तो लगाओगे, but they should not be unreasonable standards and not unjustified. Again, an attempt by the WTO to reduce non-tariff barriers. अब who will make these standards? इसकी भी बात कर लेते हैं. Anybody knows, by the way, current affairs किसने ढंग से पढ़ा हो? Sanitary and phytosanitary measures में जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे, एंड प्लीज इस चीज को लिख लेना मेरे साथ, who will make these standards? Anybody who's been preparing for 2 years or more would, जब मैं बोर्ड पे लिख दूंगा तो समझ आ जाएगा, नाम पक्का सुना हुआ होगा. FAO will not make the standards. FAO will accept the standards. चलो मैं बता देता हूं. You are close. FAO will not make the standards. देखो, whatever, अब ध्यान से सुनना, whatever FAO is Food and Agricultural Organization, whatever standards the FAO accepts, read this carefully, whatever standards the FAO accepts will be the standards that will be put in sanitary and phytosanitary measures. FAO is Food and Agricultural Organization. Whatever Food and Agricultural Organization standards it accepts as its own standards, जो इसने अपने लिए accept कर लिए, वो standards SPS में डाल दिए जाएंगे. But FAO is not an expert body. FAO is a political body. FAO does not make the standards. FAO standards बनाता नहीं है. FAO standards देखता है और उनको accept करता है. Who makes these standards? FAO is given recommendations by various other expert bodies. There are various other expert bodies that make these standards and give recommendations to FAO. FAO का काम सिर्फ इन standards को accept करना है. One of these very famous expert bodies, and I'm sure आपने ये नाम सुना रखा होगा पहले, if you are preparing for more than 2 years, then 100% you would have heard it, is Codex Alimentarius Commission. Alimentarius by elementary canal. Elementary canal is the name given in biology to our digestive system. So Codex Alimentarius Commission is the body that makes standards for what we put in our digestive system for foods. तो फूड के और एग्रीकल्चर के मेनली स्टैंडर्ड्स ये बॉडी बनाती है. दिस मेक्स रिकमेंडेशन टू FAO, देन FAO accepts it. If FAO accepts it, it automatically gets put in the sanitary and phytosanitary agreement between WTO members. समझ आई बात? नाम सुना हुआ था आपने इसका, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, या मेरा ही बायस है कि आपको पता होगा? Had you heard this name before? अच्छा, नहीं सुना था तो कोई बात नहीं. अब I hope now you've written. This is actually a previous year question, but old previous year question. I think 2010 or 11 this was asked. Principle 2 and 3 तो हमने देख लिया. So we had seen principle 1 and 2 and 3. 1, 2 and 3, like was written here, 1, 2 and 3 are part of free trade. So trade without discrimination, free trade gradually through negotiation, and predictability through binding and transparency, both of them wanting to achieve the reduction of tariff and non-tariff barriers to trade. This is part of free trade. ये बात हो गई. अब आगे चलते हैं. Next, promoting fair competition, principle number 4, and encouraging development and economic reforms, principle number 5. These two principles are for ensuring fair trade. Fair trade का भी लॉजिक हमने देखा था. Reciprocal trade, reciprocity based, right? If you like somebody, they also have to like you back. So proper reciprocity based trade होना चाहिए. One sided free trade नहीं होना चाहिए, right?
अब इसमें प्रिंसिपल नंबर 4 is promoting fair competition. There is something wrong here. Just give me 1 second. Yeah, I'll just make you write a couple of more things. So please write with me. वो notes में लिखा नहीं हुआ है. I think maybe I've sent the wrong file to you, but it's not a lot. It's just maybe 2-3 lines. I want you to write more with me. Okay, so I'm just checking. Yeah, I think this पहले तो ये आप लिख लो. This I had written later, I think. उससे पहले ये चला गया. तो एक तो ये please write this. Right? अब ये लिख लिया है हो. अब यहां से कंटिन्यू करते हैं. Principle 4 is promoting fair competition. Now, how will you promote fair competition? One thing to promote fair competition is that if a country feels that any unfair trade practices, are being practiced against it, so it should have the power to retaliate. The power to retaliate is given through anti-dumping measures and countervailing measures. अब इन दोनों को पढ़ते हैं. What is anti-dumping and what is countervailing? ठीक है. Basically, principle 4 क्या कह रहा है? That if somebody is doing unfair trade practices against you, you should have the power to retaliate against them. ठीक है. इसमें पहला है एंटी डंपिंग. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डंपिंग. डंपिंग होती क्या है? देखो, डंपिंग कैन बी एनी ऑफ द 3. ये चीज नोट्स में लिख देना. यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं. एनी ऑफ दीज 3 इज डंपिंग, नॉट ऑल 3. ये और है यहाँ पे 1 और 2 और 3, नॉट एंड. ओके, एनी ऑफ दीज 3 इज ट्रू, इट्स डंपिंग. देखो, चाइना में स्टील गेट्स मैन्युफैक्चर्ड. लेट्स से इन चाइना स्टील गेट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 100 रुपीज पर केजी. Now China wants that India's, or let's example ले लेते हैं, इंडिया में स्टील गेट्स मैन्युफैक्चर्ड एट 105 रुपीज पर केजी. China thinks that they want to destroy Indian steel industry. So what does India do? India puts a 5% customs duty, or let's say even 10% customs duty on steel from China. Right? When will this be called dumping? पहला केस, चाइना इंडिया में जो स्टील भेजे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रख दे 80 रुपीज पर केजी. चाइना नोज इट्स टेकिंग अ लॉस. ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम में बेच रहे हैं. तो चाइना इंडिया भेजे स्टील 80 रुपीज केजी में, मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपीज केजी में हो रही है. चाइनीज गवर्नमेंट कहे हाँ हम ले लेंगे लॉस. वी आर टेकिंग दिस लॉस सो दैट वी कैन डिस्ट्रॉय इंडियन स्टील इंडस्ट्री. दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 100, दे आर सेलिंग इट इन इंडिया एट 80 रुपीज पर केजी. अब 10% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी ये यहाँ पे 88 रुपीज पर केजी का मिलेगा. Everybody will buy Chinese steel and Indian steel industry will die. This is first practice of dumping. This any of these conditions बोला है, this is first practice. Second, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ स्टील इज 100 रुपीज पर केजी. चाइना अपनी मार्केट में, when it comes to market and is sold in China, China sells it for 110 rupees per kg in its own market. But when it sends to India, it sends at 100 rupees per kg.
This is also dumping. Why? Because China is selling to India at a price less than its own market price. ये manufacturing cost है या market price है? You sell less than your manufacturing cost, it is dumping. You sell less than your market price, it is also dumping. Third case, China sells steel also to Russia. When China sells steel to Russia, because there are transport cost, logistics cost, whatever, when China sells steel to Russia, they sell at 120 rupees per kg. Right? Now, पहले तो ये 120 rupees क्या है? This I want you to write. This is freight on board price. Price can be calculated at various stages. We have read something called basic price, market price, factor cost. This is freight on board price. Freight on board means चाइना से 1000 ships जाने हैं स्टील लेके रशिया, राइट? जब उनको उस शिप पे रख दिया, they have been packaged everything and they've been kept on those ships. What is the price on the ship when it stands in Chinese territory? अभी ये शिप चाइना की टेरिटरी में ही है, यहीं पर है. यहां पर जब इस शिप पे ये सारा स्टील लग दिया, अभी क्या प्राइस है? इसके ऊपर ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड होगी. इसको काउंट नहीं करते, आने जाने का खर्चा नहीं काउंट करेंगे हम इसमें. शिप पे रखने के टाइम पे क्या प्राइस है, सारी बाकी सारी चीजें काउंट कर लेंगे, पैकेजिंग, लोडिंग प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यही शिप रशिया जाना है, यही शिप इंडिया आना है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काउंट नहीं करेंगे, जस्ट कीपिंग ऑन द शिप यहां तक की क्या कॉस्ट है ये काउंट करेंगे. सो फ्रेट ऑन बोर्ड प्राइस टू रशिया इज 120 per kg and they send to India. They send to India this same steel at 110 per kg. This is also dumping. Why is the third case yellow wala dumping क्यों है? Because you are selling to India at a price lesser than you are selling at some other country. So dumping happens when any of these three conditions is met. One, China sells a good lower than the manufacturing cost. इंडिया में सेल कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम, इट्स डंपिंग. और चाइना सेल्स अ गुड लोअर देन व्हाट इट सेल्स इन इट्स ओन इकोनॉमी. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से तो ज्यादा है, बट अपनी मार्केट में जो बेचते हैं उससे कम में बेच रहे हैं. थर्ड, चाइना सेल्स अ गुड लोअर देन इट सेल्स इन अदर कंट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है, अपनी मार्केट से ज्यादा है, बट रशिया में जो बेचते हैं उससे कम में इंडिया में बेच रहे हैं. दिस इज डंपिंग. Dumping is a process where they are deliberately sending goods. Goods are deliberately sent to destroy the domestic market of a country, domestic economy of a country, domestic market of steel, domestic industry of a country. अगर इंडिया को पता चलता है कि इस टाइप की डंपिंग हो रही है, इंडिया कैन लेवी एन एंटी डंपिंग ड्यूटी, a special duty on, let's say, only the steel that's coming from China. तो इंडिया कहेगा कि दुनिया में कहीं से भी स्टील आए, दुनिया में कहीं से भी स्टील आए हम 10% टैक्स करेंगे. चाइना से स्टील आएगा तो हम 20% टैक्स करेंगे बिकॉज दे आर डंपिंग. नाउ दिस स्टील दुनिया में कहीं से भी आए तो 10% टैरिफ है, चाइनीज स्टील पर 20% है. दिस इज वायलेशन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल. एमएफएन का वायलेशन है. यू कैन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वायलेशन ऑफ एमएफएन. But if it is anti-dumping, it is allowed. So India will first have to do an investigation. Investigation will be done by Department of Foreign Trade in the Ministry of Commerce. Ministry of Commerce में जो Department of Foreign Trade है, it is headed by the Director General of Foreign Trade. This Director General of Foreign Trade this person is generally an IAS officer, but the directorate, the entire place where these people sit, most of them are officers of the Indian Trade Service. जो नई सर्विस है, ये नई तो नहीं है, but this is a very upcoming service. So if you're interested in this, Indian Trade Service is something that you can look at, right? So in the Department of Foreign Trade, in the Ministry of Commerce and Industry, they will first launch an investigation and see if actually dumping is happening. If they feel dumping is happening, they will report this to the Ministry of Finance. Here they will levy an anti-dumping duty. ठीक है, समझ आया? Anti-dumping, any of these three conditions,
डंपिंग क्लियर? इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो डंपिंग होगी। पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर पता चला ऐसा हो रहा है तो हम एक एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द इवेंट ऑफ टैक्सेशन ऑफ एक्साइज? एक्साइज अब तो है नहीं इंडिया में एक्साइज ड्यूटी, बट व्हाट इज द इवेंट ऑफ टैक्सेशन हियर? इवेंट ऑफ टैक्सेशन क्या है यहां पे? प्रोडक्शन। गुड। नहीं, प्रोडक्शन राइट, प्रोडक्शन। अब लेट्स से चाइना में स्टील गेट्स मेड, चाइना में स्टील पे एक्साइज ड्यूटी है 2%, इंडिया में स्टील पे एक्साइज ड्यूटी है लेट्स से 10%। ठीक है। अब इस केस में इवन इफ चाइनीज एंड इंडियन स्टील, लेट्स से चाइनीज स्टील इज मेड at 100 rupees per kg, after taxation it will come to the market at 102 rupees per kg. Indian steel is made also at 100 rupees per kg, but when it comes to the market in India it comes at 110 rupees per kg. अब अगर मान लो चाइना और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है, let's say there is free trade, even though cost of manufacturing was the same, just because India has higher excise duty, India's steel industry will face a lot of competition and will face a lot of loss also. So India is allowed to countervail the effects of taxes and subsidies through a countervailing duty. तो इंडिया यहां पर 8 रुपए ड्यूटी लगा सकता है कि ये बराबर हो जाए, राइट? सो काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज पुट, countervailing duty is put to counter the effects of taxes and subsidies given in अलग countries. So अगर वहां पर आप देखोगे चाइना में you have different excise duty, and India में there is different excise duty. To counter the effect of these excise duties, these subsidies, these taxes, and to actually compare products on manufacturing cost, to ensure that products are actually compared on manufacturing cost, countervailing duty can be put. These two things, one anti-dumping duty, one countervailing duty, these are meant for promoting fair competition. Promoting fair competition. So two things, one anti-dumping duty, two countervailing duty. Put for promoting fair competition. If you feel someone is having unfair trade practices against you, you can launch retaliatory steps. You can retaliate through these. This is fourth principle of WTO. Fifth principle, encouraging development and economic reforms. बहुत easy principle to understand है. ये कहता है that there has to be differential treatment of developing countries and developed countries. Right? तो developing countries और developed countries के बीच में there will be differential treatment. Right? Because obviously these countries are more advanced. So developing countries must be given additional flexibility. Flexibility needs to be given to developing countries rather than giving equal treatment to developed and developing countries. Developing countries को flexibility मिलनी चाहिए. तो जैसे WTO ने सबको कहा है that you have to reduce your tariff and non-tariff barriers. For developing countries, the targets of reduction will be lesser.
and the timeline of reduction will be more. तो अगर कुछ टैरिफ बैरियर्स कम करने हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा कम करने हैं और डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा जल्दी कम करने हैं. दिस इज द आइडिया. हाउ इज दिस एनफोर्स्ड? This is enforced on the basis of two things. One is special safeguard mechanism and one is special products. Special products and special safeguard mechanism. Right? अब पहले बात करते हैं what is special products. Special products are agricultural goods. Next page पे लिखा है. They are agricultural goods that can be designated by developing countries and where they want flexible treatment. Let's say India says to WTO कि देखो हमें with respect to onion का ट्रेड होगा वर्ल्ड में. With respect to onion we need some special features, some special provisions. They are called, onion will be called a special product. Why is India able to invoke this? Because of principle 5, which allows for developing countries to have more flexibility as compared to developed countries. तो अनियन को पहले हम डेजिग्नेट करेंगे एज अ स्पेशल प्रोडक्ट. Once you designate it as a special product, once you designate onion as a special product, then what happens? Then you get access to something called special safeguard mechanism. अब इसमें क्या होगा? Let's say that price of onion, एक वर्ल्ड मार्केट है अनियन की, राइट? ये बात आप समझ पा रहे होगे कि एक वर्ल्ड मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में अनियन प्रोड्यूस हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में अनियन की सप्लाई है, डिमांड है. लेट्स से प्राइस ऑफ अनियन इन द वर्ल्ड, ओवर प्रोडक्शन हो गई, हर कंट्री में अनियन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई. अभी हम वर्ल्ड मार्केट्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स, राइट? डिमांड इज मोर और लेस द सेम, बट दिस ईयर देयर वाज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ अनियन. So normally onion supply looks like this. This year onion supply is looking like this because everybody has produced it. Too many suppliers have come. So what will happen? Price of onion will fall and quantity of onion that was available will increase. Quantity will increase, price will fall. Right? Up. In this case, what will happen? If you are an Indian consumer, you can simply import onion. वर्ल्ड में हर जगह ही अनियन प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, तो वर्ल्ड में जो इंपोर्ट प्राइस है अनियन का वो बहुत कम हो गया. तो यू विल जस्ट इंपोर्ट इंपोर्ट अनियन. यू विल नॉट बाय फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से नहीं खरीदोगे. सो नाउ दीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर फार्मर्स हु आर ग्रोइंग अनियन. उनको अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. They will not be able to, have a remunerative pricing of their produce. So, इस केस में India is allowed to put a special safeguard in the form of an import duty. India अब import duty लगा सकता है as a special safeguard mechanism. Similarly, इसका उल्टा भी हो सकता है. That let's say world में कहीं भी onion production अच्छी नहीं हुई. वर्ल्ड में कहीं भी अनियन प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, and what happens is demand still is the same but supply now has become very restricted. Onions are difficult to find. Supply पहले इधर थी, अब यहां पहुंच गई है. What will this mean? This will mean that the price of onions will increase and the quantity of onions available will decrease. अब आप अगर एक इंडियन प्रोड्यूसर हो, now if you are an Indian producer, what will you want to do? You will want to put export. You will want to actually export. आप इंडिया में बेचना ही नहीं चाहोगे, आप चाहोगे मैं एक्सपोर्ट करता हूं. If I export, I will get a very good price. But if you export, Indian domestic market will run out of onions, and in price in India will become very high. Indian consumer will now be facing a challenge because India के सारे farmers तो export कर रहे हैं अनियन को. इंडिया में जो सप्लाई थी वो कम हो गई, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइस बढ़ गया. So here government can again use their special safeguard mechanism to put an export duty. And why are these measures allowed? ये random import और export duty क्यों allowed है world market के लिए? Because we have opted for something called special safeguard mechanism.
right? Gives developing countries a tool to protect their agricultural sectors from sudden surges in imports or a drop in import price, right? So they can impose additional tariff. We are being given this mechanism called special safeguard mechanism because we have designated onion as a special product, allowing us to safeguard ourselves from international trade variability in onion price. समझ आई ये बात? Last thing that we read, special safeguard mechanism and special product status. ठीक है, तो अब एक बार वापस WTO के 5 प्रिंसिपल्स को रिव्यू करते हैं. We've read all the 5 principles. जल्दी से एक बार देख लेते हैं, पांचों को रीड कर लेते हैं. Trade without discrimination, principle 1, where MFN and national treatment. Free trade gradually through negotiations, right? Reduction of tariff and non-tariff barriers to trade. Third, predictability through binding and transparency. These 3 principles for fair trade. Next 2 principles, promoting fair competition and encouraging development and economic reforms, right? Fair competition में 2 measures, anti-dumping duty and countervailing duty, and development and economic reforms, developing countries and least developed countries, giving them a special safeguard mechanism through the identification of special products. These are 5 principles. पहले 3 for free trade, next 3 for fair trade. अब आगे चलते हैं. यहां से I'll move on to the notes of today's class. Now we'll read the various agreements of WTO. WTO का एक अग्रीमेंट तो है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT. 5 अग्रीमेंट्स हमें पढ़ने हैं. उन 5 में से दिस वन GATT, ये तो नॉर्मल ही है, ये तो हम पढ़ चुके हैं. दिस इज व्हाट वी बीन रीडिंग. टैरिफ बैरियर्स, दिस इज बेसिकली फॉर ट्रेड इन गुड्स, एंड दिस इज द वन दैट वी बीन रीडिंग एनीवे. तो अब जो बाकी एग्रीमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं. सो विल जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक, देन वील रीड GATS. ठीक है, GATS पढ़ेंगे, ट्रिप्स, ट्रिम्स, AOA पढ़ेंगे. ये पढ़ने के बाद फिर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर एक टेस्ट करेंगे. ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? थोड़ा लॉजिकली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ WTO इज स्ट्रक्चर्ड? ठीक है, आई विल नाउ टेक अ स्मॉल ब्रेक. We'll take a small break and then we'll continue from here. यहीं से कंटिन्यू करते हैं.
All right. Somebody is asking difference between CECA and CEPA. बता देता हूँ before we move on. So there are two types of agreements. Although this is not that important, but ठीक है. अगर पूछ लिया है तो CECA is Comprehensive Economic Cooperation Agreement. CEPA is Comprehensive Economic Partnership Agreement. They are both technically types of free trade agreement. ये लिख लेना please because this is not in the notes. CECA is mainly focusing on tariff, quotas, etc. So mainly on goods. CEPA is more comprehensive because it looks at goods as well as services. So main difference between them is that CEPA is considered much more comprehensive. Right, as compared to CECA, and CEPA is also having a broader scope since it also looks at services, while CECA, Economic Cooperation Agreement, only looks at tariffs, quotas and goods production, whereas CEPA will look at both goods and services. It's more comprehensive. That's the only difference, but again not that important. If you just remember FTA, even that will be fine. अभी तक हमने WTO के agreements में we have looked at as far as WTO is considered. Now we are coming to the end of our discussion on WTO and international organizations. WTO mein we have looked at one, the general agreement on tariff and trade, and how have we understood this agreement? By understanding its most key principles. We've understood the 5 principles that the WTO propounds under the GATT. अब WTO के जो बाकी agreements हैं उनको देखते हैं. So the first agreement now that we're going to see is going to be जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS और GATS. तो GATS अग्रीमेंट में क्या लिखा है उसकी बात करते हैं. So again, job of WTO will remain similar. What is the job of WTO? That ultimately there should be free and fair trade. So now it is talking of trade in services. So it is saying that you need to liberalize trade in services by removing restrictions. Right? So it's saying that countries will move towards more free trade in services. So there are actually 4 forms of trade in services called modes. So mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. And mode 4 is the one that is the most liberal, while mode 1 is most restricted. So there is an expectation that you will move from mode 1 to mode 4. ठीक है. अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बता देता हूं what is mode 1, 2, 3, 4. ठीक है. Let's say this is USA. This is India. And now they have to trade in services. So India में एक कंपनी है, let's say company's name is Wipro. India में एक कंपनी है Wipro. Mode 1 is the most basic form of trade and services is that there is a US company. There is a USA company. Let's say, let's call it KFC. Okay. KFC is an American company. American company needs some support from Wipro. Wipro को वो कहते हैं कि हमें आप एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो. Let please make a software for us. Give us software services. So this would be trade in services. Mode 1 would involve KFC being obviously in US, being there as it is, and Wipro making a software and sending it over the internet, or Wipro giving them, let's say, customer support services. At any sort of services. KFC is not probably the best company to write here, तो बोइंग रख लेते हैं यहाँ पे, बोइंग से समझ आ जाएगा. तो बोइंग का जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं वो इंडिया में आउटसोर्स्ड हैं. इंडिया में लोग काम कर रहे हैं विप्रो के ऑफिसेज में, बट द सर्विसेज दे आर एक्चुअली गिविंग टू बोइंग, एंड बोइंग इज पेइंग विप्रो. दिस इज मोड 1. मोड 1 इज सिंपली क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. अब सेकंड, बोइंग गोज एंड एक्सपैंड्स इट्स ऑफिसेस. बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है. बोइंग ने अपना ऑफिस एक्सपैंड करके दे ओपनड एन ऑफिस इन फ्रांस. नाउ दिस ऑफिस आल्सो नीड्स कस्टमर सपोर्ट. दिस ऑफिस आल्सो गेट्स कस्टमर सपोर्ट फ्रॉम विप्रो इन इंडिया. दिस इज मोड 2. कंपनी इज अमेरिकन, ऑफिस इज इन फ्रांस, services trade is happening with India.
right? You can understand this. This is mode 2 of services trade. Third mode would be, now mode 1 and mode 2 में अगर आप देखो, अभी तक mode 1 mode 2 की बात की है. In both mode 1, this is mode 1 and mode 2, in both mode 1 and 2, Wipro stays in India. Wipro Indian company है और इंडिया में ही रहती है. It does not move from India, only the services are exported, right? Now let's talk of mode 3. In mode 3, Wipro goes and sets up an office in USA. Wipro is an Indian company. It sets up a branch in USA, and from this branch, it offers services to various American companies. So Wipro now is allowed to go to USA and set up a branch. This is mode 3. That Wipro is allowed to go to USA and set up a branch in USA, and from there, Wipro can offer services to various American companies. And then finally, there is mode 4. Mode 4 would mean that any person also, ये थोड़ा सा difficult है to understand, so I'll just tell you. Any person, doesn't necessarily have to be a company, can go directly to USA and offer their services. देखो मोड 3 में क्या होगा, पहले मोड 3 को समझते हैं. मोड 3 में क्या होगा कि विप्रो ने अपना ऑफिस यूएसए में खोला. I am an engineer who works in Wipro. I will be allowed to go to USA, but I will be allowed only to work in Wipro's office because I'm still a Wipro employee. I'm not a natural person going to USA. मैं यूएसए अपनी कैपेसिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं यूएसए विप्रो के ऑफिस में काम करने जा रहा हूं. ये बात समझ आई? मोड 4 अभी भूल जाओ. मोड 3 में ये बात समझ आई दैट इफ आई एम अलाउड टू गो टू यूएसए, आई विल बी अलाउड टू गो बिकॉज आई एम an employee of Wipro working under Wipro. Actually, who has moved? Wipro has opened a new branch. I am only allowed to go because I am employee of Wipro. ये मोड 3 है. ये बात समझ आ रही है? मोड 4 अभी बताता हूं फिर इसके बाद. ठीक है. मोड 4 क्या है? I am an engineer. An American company, it does not have to be Wipro. An American company demands that they need an engineer, and I am simply able to go and work for that American company. Right? I am directly allowed to go and work for that American company. I don't need to be employed. Wipro की कोई जरूरत नहीं है. Even independent professionals, मैं Wipro का employee हूं ना हूं, even independent professionals, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर हूं, मान लो अब यूएस में किसी हॉस्पिटल को एक एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत हो, तो मैं सीधा जाके अप्लाई कर सकूं. दैट वुड बी मोड 4. दैट इवन प्रोफेशनल्स, पीपल कैन मूव टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर सर्विसेज ट्रेड. दीज आर द 4 मोड्स. एक बार पढ़ लेते हैं. मोड 1 वाज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड रिमोटली अक्रॉस बॉर्डर. मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड, सर्विसेज कंज्यूम्ड इन अ डिफरेंट कंट्री, जैसे वहां पे फ्रांस में बोइंग के ऑफिस में सर्विसेज कंज्यूम हो रही थी. थर्ड, कमर्शियल प्रेजेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन फॉरेन मार्केट्स, विप्रो ने ऑफिस खोल लिया. 4, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेम्पररी मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स अक्रॉस बॉर्डर्स. सो IT engineers, consultants, doctors, healthcare professionals, they can go and offer their services. These are the 4 modes under which GATS operates. Obviously, ये जो fourth वाला है, this is having the least barrier to trade. अगर मुझे अपनी सर्विसेज अभी यूएसए में लेट्स से मेडिकल सर्विसेज डिलीवर करनी है, तो अभी मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता, राइट? और जा भी सकता हूं तो देयर इज अ वेरी लॉन्ग वीजा प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई कैन नॉट merely go as a worker, supply my services and come back, right? This would be mode 4. The expectation of the general agreement on trade and services is that from mode 1 to 2, then to 3, then to 4, countries will move ultimately from mode 1 to mode 4. This is the expectation that countries would eventually move to mode 4, and this is the most free form of trade as far as trade and services is considered. ये बात समझ आई? This is clear now? Mode 1, 2, 3, 4. ठीक है, अगला अग्रीमेंट देखते हैं. This is all we need to know about general agreement on trade and services.
WTO में अभी मैंने आपको बताया था कि there is not been a decision on the Doha development agenda since 2001. Why? Because of the structure of WTO. WTO operates on one country, one vote. Okay, one country has one vote. This is not like the IMF. IMF में your vote is determined by what? What determines your vote in the IMF? एक बार देखते हैं आपको कितना याद है. What determines your vote in the IMF? One word answer. What determines your vote in the IMF? Very good, Sakshi. Quota. Only your quota. Quota might be determined by various other things, right? How much fees you have given, right? SDR don't determine vote. Quota determines vote. Quota determines SDR. Quota determines vote. Quota is the answer, है ना? It's not SDR. You can think it's SDR. I mean, देखो यार, ऐसा है कि certain features like variability, openness of the economy, size of GDP, this determines quota. Quota determines SDR, and then you can say SDR determines vote, but then only quota is determining your vote, right? So इसमें confuse ना हो, इसलिए बता रहा हूँ. SDR बोलो, quota बोलो, you should be aware of this idea. अब WTO operates on one country, one vote. Problem here is that all the decisions of WTO is very laughable actually, have to be taken by consensus. Consensus means everyone has to agree. So if one country says no, decision will not be taken. So till all the countries agree, decision will not be made. That is why WTO is unable to solve its negotiations ever. Right? 2001 की 25 साल होने वाले हैं. 2001 की negotiation अभी तक solve नहीं हुई है. Why? Because decisions are to be taken by consensus. Now, WTO agreements. Important agreements are GATT, GATS, TRIPS, TRIMS and AOA. Right? GATT और GATS हमने समझ लिया. TRIPS की बात करते हैं. TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights Agreement. अब, what are intellectual property rights? This I have already taught you in Science and Tech. What is copyright? What is patent? Industrial design, trademark, trade secrets, GI tag, ये पढ़ चुके हैं, right? Broadly, what is intellectual property rights? These are rights given on the creation of your mind, and you get exclusive commercial benefits for the creation of your mind. For example, this lecture is creation of my mind, so I should get exclusive commercial benefits for it. But एक चीज होती है फिर टेलीग्राम नाम की, और वहां पर फिर कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स और कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के एनेबलर्स ये पायरेसी करते हैं, बट क्या कर सकते हैं, राइट? एनीवे, बट दिस वी हैव रेड ब्रॉडली, वी हैव रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अब ट्रिप्स अग्रीमेंट में क्या लिखा है? आई हैव ऑलरेडी टॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन साइंस एंड टेक, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट हियर, बट व्हाट इज रिटन इन ट्रिप्स उसकी बात करते हैं. ट्रिप्स इज, इसको ठीक कर लेना यार, एन अग्रीमेंट अंडर WTO. AG ने लिखा वहां पे अग्रीमेंट अंडर WTO. यहां पर क्या लिखा है देखो, अगर मैं देखते हैं आपको कितना याद है. इफ आई टेक अ पेटेंट, if I have to take a patent of, let's say, a new pharmaceutical medicine, and I want that I should get the patent in both USA and India, do I have to register only in USA, only in India, or in both places? Tell me, आपको कितना याद है? मुझे दोनों जगह प्रोटेक्शन चाहिए, तो मुझे कहां रजिस्टर करना पड़ेगा? Both places. Very good. Because patent is based on geographical places. तो अगर आपको यूएस में अपना पेटेंट प्रोटेक्ट कराना है तो आप यूएस में रजिस्टर करो, इंडिया में भी प्रोटेक्ट कराना है तो इंडिया में भी रजिस्टर करो. बट एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर अ कंपनी दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. आप हर जगह अपना पेटेंट रजिस्टर कराओ, हर जगह पेटेंट प्रोटेक्शन सीख करो, राइट? तो ट्रिप्स में क्या लिखा है? पहली सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज, दैट ऑल कंट्रीज will grant protection to something patented in one member country. अगर इंडिया में किसी ड्रग के लिए पेटेंट मिल गया तो it will be assumed
that automatically this protection will be granted to all other countries or granted in all other countries that are WTO members. तो आपने इंडिया में अपना ड्रग पेटेंट करा लिया तो यूएस में भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट? This is the first thing, because we don't expect companies to go, door to door seeking patents, right? So this is the first thing, that all countries will grant protection to something patented in one country. It will be automatically protected. Second, अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के जो पेटेंट्स एक्ट है, दैट वाज अमेंडेड इन 2006 and it became TRIPS compliant after this amendment in 2006. Indian Patents Act में section 3 clause D में there is something called evergreening of patent. Evergreening of patent, compulsory licensing, parallel import. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, right? So this evergreening of patent is also not allowed under TRIPS agreement. तो TRIPS agreement में ये compulsory licensing allowed है, parallel import allowed है, evergreening allowed नहीं है, right? So same as India's Patent Act, TRIPS agreement also has similar features. Let's look at the case of Novartis and Bayer, right? ये दो कंपनीज हैं. अब इन दो कंपनीज की दो मेडिसिन थी, ग्लिविक और नेक्सावार, right? Glivec and Nexavar. Now what happened in these cases, Novartis is second biggest pharmaceutical company in the world. First biggest is Pfizer. Pfizer has more revenue from one drug than is the valuation of the biggest Indian pharmaceutical company. एक ड्रग से फाइजर जो पैसे कमाता है वो इंडिया की बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की वर्थ से ज्यादा है, ठीक है? दैट्स हाउ बिग दोस कंपनीज आर. तो नोवार्टिस का एक ड्रग था ग्लिविक. नाउ ग्लिविक वाज एंटी कैंसर ड्रग. ये काफी चीजें मेंस के लिए रेलेवेंट हैं, प्री के लिए रेलेवेंट नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दिस विल आल्सो मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट. नोवार्टिस का ड्रग था ग्लिविक. Now Glivec was anti-cancer drug and cost of Glivec was 4.4 lakh rupees per month. ठीक है, एक कैंसर पेशेंट को पर मंथ ये पे करना है. So obviously only if you are very 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 rich you will be able to afford this treatment. Otherwise you won't be. Of course it was a very good drug, but this is very high cost, right? तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, साइटिंग दिस प्रॉब्लम, और ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंपल्सरीली लाइसेंस compulsory licensing provision under TRIPS and under the Indian Patents Act and gave this license to Bharat Biotech. Then Bharat Biotech was asked to manufacture Glivec at $800 per dose. वो भी कुछ बहुत ज्यादा है, तो वो भी काफी ज्यादा, but it's like 64,000 rupees approximately, right? And then give certain royalty back to Novartis. This was one thing that was done. Second case है Bayer का. Bayer is also a very large pharmaceutical company. They had a drug called Nexavar. अब इसका जो पेटेंट था, it was set to expire. I mean, that's broadly what the story is. I'm just trying to teach you something else. Name of drug is not important. Patent was about to expire, right? अब यहां पर there is a, आपको मैंने I think पढ़ाया था साइंस एंड टेक में, the concept of generic medicines. We have read this. जेनेरिक मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि वंस द पेटेंट एक्सपायर्स, 20 इयर्स के लिए मिलता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस पे पेटेंट. आफ्टर 20 इयर्स, वंस द पेटेंट एक्सपायर्स, एनी कंपनी कैन नाउ मेक दिस सेम फार्मास्यूटिकल केमिकल. कोई भी बना सकता है इसको. तो आप जो इससे विंडफॉल गेन्स कर रहे थे, ह्यूज प्रॉफिट्स कर रहे थे, वो विंडफॉल गेन्स खत्म हो जाएंगे. तो 20 इयर्स के बाद, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. लेट्स से यही ड्रग है नेक्सावार and the patent belongs to a company called Bayer, right? अब देखो, I think the spelling is
this. There's a Y in the spelling, right? So this is, it belongs to Bayer. Ab dekho. Let's say today is 20th March. 20th March 2025 the patent expires today. अब अगर आज जो जेनेरिक ड्रग्स कंपनीज हैं वो आज इस ड्रग को बनाना शुरू करेंगी, लेट्स से देयर इज सन फार्मा, देयर इज एबट, देयर इज रैनबैक्सी तो ब्रांड नहीं बट एक्सेट्रा, टोरेंट फार्मा, यूएसवी एक्सेट्रा, जो इंडियन जो भी कंपनीज हैं, these companies if they now start making Nexavar, will they be able to manufacture it today? No. They will have to go through a rigorous process. They will have to first manufacture the drug, then go for compliances, take license, do safety testing, because exactly same drug to wo banayenge nahi, kuch to they will also have their own process, and then finally it will come to market. ये बात समझ आ रही है आपको कि अगर आज नेक्सावार का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, इफ नेक्सावार पेटेंट इज एक्सपायरिंग टुडे ऑन 20th March 2025, it is impossible for this other generic drug to come to the market at least today. It will take at least 3 to 4 years. तो effectively ये तो पेटेंट और एक्सटेंड हो गया, right? You understand this? Therefore these generic drug companies, ये जो generic companies हैं, they are allowed to take Nexavar, make the similar chemical and go for testing before the expiry of patent. तो आज अगर 20th March 2025 को अगर पेटेंट एक्सपायर हो रहा है तो वो 2022 से ही ये टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं. They are not allowed to sell before this patent expiry. But before this patent expiry, they can do all of this process ताकि 20th को पेटेंट एक्सपायर हो और 21st को वो तैयार खड़े हो अपना नेक्सावार लेके, राइट? दिस थिंग इज कॉल्ड द बोलार एग्जेम्पशन. लिख लेना ये प्लीज. दिस वाज आस्क्ड टू मी इन माय यूपीएससी इंटरव्यू एंड आई डिडंट नो इट देन. ये सॉरी बोल के आया हूं मैं इस क्वेश्चन में. UPSC interview में thankfully still got a good score. Lieutenant General Raj Shukla sir was very kind. But this is what the Bolar exemption is. Interview में पूछा हुआ सवाल है, मेरे से ही पूछा था, ठीक है? तो ये समझ आया पहले तो Bolar exemption क्यों होता है, लॉजिक समझ आया ऑफ Bolar exemption? अब what Nexavar or what the case of Bayer was trying to get an evergreening done. evergreening कैसे करते हैं कि देखो नेक्सावार का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, फिर से पेटेंट ले लिया. नेक्सावार को कह दिया कि देखो इसका तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई है और पेटेंट ले लिया. नाउ अंडर ट्रिप्स if Bayer gets this, अब देखो Bayer gets this protection let's say in Germany, ठीक है, जर्मनी में Bayer को ये प्रोटेक्शन मिल जाए. Under TRIPS India is also now supposed to give this protection. If Bayer is German company, जर्मनी के तो फेवर में है उनको प्रोटेक्शन देना, because Germany will say that if we don't give this protection, every Indian company will start making Nexavar and Germany will lose out on money. Otherwise, Bayer would make profits and profits would accrue to German nationals. But if Germany does not give this protection, the patent is gone away, then Indian companies will make it and profits would come to Indian nationals. तो Germany के तो interest में है कि ये patent चलता रहे. तो by taking a bribe or whatever, Germany continues to give patent protection to Bayer even after 20 years. That would be evergreening. And under TRIPS, it is written that if you think that patents have been fraudulently awarded for evergreening, you can say no to giving protection. Germany को अपने एरिया में देना है तो दे. India will not give protection because India thinks that this is evergreening. This was an undeserved extension of this patent for 20 years. ठीक है? This is the case that happened with Nexavar. Similar case happened with Nexavar, that India did not allow for evergreening. Now, in both these cases, there was huge loss to Bayer and to Novartis,
which are American and European countries respectively. On the basis of this, ये चीज proven नहीं है, but it is widely agreed that it is on this basis that Indian consignment of Alfonso mangoes, because ये सारे incidents उसी टाइम के हैं 2011, 12, 13, ये जो consignment रोकी गई, it was mainly to give a response to these two things. This is how diplomacy works. आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है. On a frivolous ground that एक मैंगो पे एक मक्खी बैठने की फोटो थी कहीं पे, on that ground Alfonso mangoes को पूरा बोल दिया, पूरी consignment was rejected as a retaliation for compulsory licensing use and not allowing for evergreening. So now, have you understood the idea of evergreening of patent, compulsory licensing, Bolar exemption, and both these cases? समझ आया broadly क्या चल रहा है? All right. If you ever get a mains question on something close to patents or pharmaceutical patents, देखो इसमें ना ऐसे बस मेंस के लिए बता रहा हूँ, 1 मिनट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा because prelims is very close, but still you should know. If you get a mains question on pharmaceutical patents, always take care. There are 4 stakeholders in this process. One is society. Society का interest यहाँ पे क्या है? Society is gaining innovation. Society gains innovation. अगर कोई भी चीज पेटेंट हो रही है, that means somebody has created something of their mind, something new has been born. So society gains innovation. Government gets patent revenue, right? Government also gets economic growth, and government is also the one who has to decide whether compulsory licensing and parallel import and evergreening, these provisions have to be invoked or not. Then there are the patentees, people who have actually made the invention. देखो इनका एक इंटरेस्ट है यहाँ पे, and that interest is legitimate profit. This is the interest we generally forget. What is legitimate profit? You are allowed to make profit. And now when you think of profit, again think of it as land, labor, capital, entrepreneurship. If land is supposed to make rent, if labor is supposed to get salary, if capital is supposed to get investment return, right, or interest rather, then entrepreneurship is supposed to make profit. Making profit is not a bad thing. What is a bad thing? Profiteering is bad. Profiteering is you are making illegitimate profit. हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्या कहते हैं? Ease of doing business, support business. Business का तो काम ही है profit बनाना. Profiteering is bad. कि आप illegitimately through some unscrupulous means you are trying to make profit. That is bad. तो यहां पर इनका legitimate right of profit है, and competitors have a right to legitimately compete. इसीलिए ये सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अभी लॉ ऐसा है कि 20 इयर्स पेटेंट लास्ट करेगा, इमरजेंसीज में कंपल्सरी लाइसेंसिंग होगी, पैरेलल इंपोर्ट अलाउड होगा, एंड आफ्टर 20 इयर्स एनीबडी कैन मेक दिस पेटेंट एंड देयर विल बी नो एवरग्रीनिंग. ठीक है, तो मेंस के आंसर में अगर यही बातें लिखनी हो, always write it from the perspective of these 4 stakeholders, because there is a sort of bargain between the innovators and the society in this case. Society is saying that you are giving us innovation, you are giving us new products, for that we are giving you rights for exclusive benefits. So this is actually a negotiation that has happened, and it should be fair to all 4 stakeholders, and all 4 can protect their legitimate rights. ट्रिप्स से रिलेटेड एक चीज और is TRIPS Plus. TRIPS Plus is not a part of WTO. This is not a part of WTO's agreements. TRIPS Plus was negotiated by some 10-12 developed countries, and they say that we need to have even more strict IPR protection as compared to TRIPS. जो TRIPS में protection है उससे भी ज्यादा stricter rights और protections होने चाहिए. This is not part of WTO agreements. Of course, developed countries where most of the innovation is happening right now, they would want to negotiate such an agreement where their companies would get even more profit from the developing world. But it's not a part of
the WTO agreements, Indian patent law and Indian Copyright Act, for example, is fully compliant with TRIPS, but we are not compliant with TRIPS Plus, and होने की जरूरत भी नहीं है. We are fully compliant with TRIPS agreement. अब यहां पर एक समरी लिखी है of what we have already studied in science and tech. Copyright, patent, trademark, geographical indicator, trade secret, ट्रिप्स में क्या होता है, पेटेंट कैसे मिलता है, एक दो एग्जांपल्स भी लिखे हैं. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना. अगर आपने साइंस एंड टेक में पढ़ लिया था तो दिस ऑलरेडी डन. ठीक है, समझ आया ट्रिप्स अग्रीमेंट? अगर साइंस एंड टेक में पढ़ा था मेरे साथ तो दिस वुड बी अ जोक, बट एनीवे, हैव यू गाइस अंडरस्टूड द ट्रिप्स अग्रीमेंट? क्या यहां पर बात हो रही है? Which page is missing? Nandini. Yeah, I don't think any page should be missing. अगर होगा तो मैं देख लूंगा. Don't worry, I'll upload this only. यार टेंशन मत लो, आपके लिए लिखा है. The third WTO agreement that we have to read is TRIMS agreement. तो हमने अभी तक actually fourth, we have seen GATT, we have seen GATS, we have seen TRIPS agreement. Now we are going to read TRIMS agreement. TRIMS stands for Trade Related Investment Measures. Trade Related Investment Measures. TRIMS agreement is actually a WTO agreement which is part of GATT. General Agreement on Trade and Tariff. This is for goods. इसका एक पार्ट है ट्रिम्स अग्रीमेंट. ठीक है, so it is related to measures that affects foreign investments in goods, part of GATT, not part of GATS, right? It was established during Uruguay round of negotiations. तो 1995 से ये established है. ये actually बना है for enforcing the two things, the idea of national treatment and the idea of quantitative restriction. What is quantitative restriction? Import quota, कि हम इतना ही import करेंगे, right? There should be no restriction in terms of value of import. कि we can import, but we can only import 100 TVs per year in India. अगर Indians खरीदना चाहते हैं और आपका agreement है, तो they can import as much as they want. So TRIMS tries to enforce national treatment and TRIMS tries to enforce that these quantitative restrictions, these import quotas should be done away with. कैसे? It says कि these are certain types of restrictions to foreign investment. ये investment restrictions की बात हो रही है अब, कि कोई foreigner आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, FDI करना चाहता है, FPI करना चाहता है, उन पे इस टाइप की restrictions आप मत लगाओ. तो investment measures based restrictions it tries to eliminate. कौन कौन सी restrictions देखते हैं. एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स. कि अब एग्जांपल इज इंडिया सेज दैट, इंडियन गवर्नमेंट सेज दैट वी आर गोइंग टू प्रोक्योर कार्ड्स फॉर आवर एम्प्लॉइज. हम सारे आईएएस ऑफिसर्स के लिए कार्ड्स खरीदना चाहते हैं, लग्जरी कार्ड्स खरीदना चाहते हैं, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 50% लोकल कंटेंट. इंडियन सोर्स कंटेंट उन कार्ड्स में 50% होना चाहिए, हम तभी प्रोक्योर करेंगे. दिस इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. TRIMS tries to eliminate these requirements. Second is manufacturing requirement. कि हम IAS officers के लिए luxury cars खरीदना चाहते हैं, but they must be manufactured in India. This is also a restriction. This needs to be done away with. Trade balancing requirement. We want to, procure cars for IAS officers, luxury cars for IAS officers. But we will only allow those countries to participate in this tender who have favorable trade balance with us. जिनके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस खराब है, जैसे चाइना है, we have a huge trade deficit. China cannot participate. This is again a restriction. This should be done away with. Domestic sales requirement. That if you want to invest in our country, if you want to have a certain, your goods need to be given national treatment in our country, we are having this requirement that at least certain percentage of what you produce here should be sold in India only.
अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा के सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपको नेशनल ट्रीटमेंट नहीं देंगे. देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स, राइट, दैट इफ यू वांट टू लेट्स से गिव अस एनी डिफेंस इक्विपमेंट, हम F-35 अभी शायद खरीदेंगे यूएस से, तो हम कहेंगे हम वर्ल्ड से सिर्फ वहीं से F-35 खरीदेंगे जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे. एंड नाउ यू नो व्हाट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मींस, जो हमें अलाउ करे टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाने को. सिमिलरली एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, लोकल इक्विटी. Local equity means if you want to open a business in India, you want to invest in India, 5% at least minimum share or equity holding should be with an Indian citizen. Foreign exchange restrictions, remittance restrictions के आप यहाँ पर बिजनेस खोल लो बट आप इतने ही पैसे रेमिटेंस में दे सकते हो, सारे नहीं दे सकते, बाकी आपको इंडिया में रखने पड़ेंगे, राइट. These type of investment restrictions, they violate the principle of national treatment. एक बार गुड यहाँ आ गया, एक बार इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गई, all of them have to be treated the same. You cannot treat them differently. But these sort of restrictions violate national treatment principle, and TRIMS agreement as part of GATT tries to reduce these restrictions, right? Now, you can have certain non-conforming TRIMS. Non-conforming means certain areas where you do not follow these principles. You can have certain conditions. There you are required to notify the WTO in advance. आपको WTO को पहले से बताना होगा कि हाँ देखो इन चीजों में हम ट्रिम्स से अग्री नहीं कर रहे हैं, and in this specified time period we will eliminate these non-agreement non-conforming parts. जैसे कि India did this. इंडिया ने कैसे किया ये? India said that in newsprint we have local content requirement कि इतना local content होना ही पड़ेगा, तभी हम newsprint मानेंगे, तभी we will allow that newspaper to sell in India. Local content requirement in rifampicin and penicillin production. Rifampicin and penicillin are both antibiotics. तो rifampicin अगर इंडिया में बननी है, सेल होनी है, तो उसमें इतना local content होना ही पड़ेगा, right? This India has notified that these are the 3 trims. Later, India has done away with them also. By December 1999, they were fully eliminated. These measures were fully eliminated by December 1999. तो आप पहले से बता सकते हो कि हाँ देखो यार इन चीजों से हम कंप्लाई नहीं करेंगे for this amount of time. But again, transparency, predictability and binding. Third principle अब समझ आ रहा है? Transparently we told them that we are going to not agree here. Then we had a predictable route that okay by next 5 years we are going to eliminate. We had a binding thing, so हमें eliminate करना भी पड़ा in the next 5 years. So this was the idea of principle number 3, predictability through binding and transparency, right? I hope this is clear now. TRIMS का एक basic idea लग गया आपको कि TRIMS क्या कर रहा है. Just basic idea is important about these agreements. Questions are asked. इन agreements पे question आते हैं, आज के टेस्ट में भी इन agreements पे question है, but they are basic questions. समझ आई अभी तक बात? अब अभी एक्चुअली किसने क्वेश्चन पूछा, would BrahMos export be controlled by WTO or MTCR? Neither will it be controlled by WTO, nor will it be controlled by MTCR. देखो, these are international organizations. There are a set of rules that you agree to, but nobody can actually stop you from violating these rules. This is not a super government. Ultimately, India is sovereign nation. India can decide to do whatever they want. If we don't agree to these rules, other countries might put sanctions against us. They might decide not to trade with us. So we are agreeing to certain rules globally, but they will not control our trade. ये distinction बनाना आपके लिए important है. Since I saw that question, I thought it was important to answer. Neither WTO will control export of BrahMos, neither MTCR will control. Only India will control. But India is agreeing to certain rules in WTO. India is also agreeing to certain rules in MTCR. If you violate the rules of WTO, other members of WTO might decide to sanction you.
If you violate the rules of MTCR, other members of MTCR might decide to sanction you, but nobody can control you. ये बात समझ आ रही है आपको? Is this distinction clear? Agreement on agriculture. This is the last WTO agreement that we are going to read. It is called the Agreement on Agriculture. Obviously, WTO में हमने देखा है that there are 5 principles, 3 principles for free trade, 2 principles for fair trade. In WTO, especially as far as agriculture is considered, in agriculture, what is more important? Fair trade is much more important as far as agriculture is considered with respect to free trade. तो free trade से कहीं ज्यादा important है कि fair trade हो. Free trade तो देखो agriculture में बहुत मुश्किल है, because जो least developing countries हैं और developed countries हैं, developing countries हैं, the 2 countries LDCs and the developing countries, these are mostly रूरल इकोनॉमीज. दीज आर कंट्रीज दैट आर एग्रीकल्चर बेस्ड एंड इनको हमने फ्लेक्सिबिलिटीज भी देनी है. तो दीज कंट्रीज टिल दे डोंट डेवलप एंड बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड, देयर विल बी नो फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर. राइट, कम होगा. फ्री ट्रेड होना एग्रीकल्चर में एक मुश्किल चीज है. बट फेयर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, अब हमें पता है कि एज पर प्रिंसिपल नंबर 5, flexibilities are given to developing countries and LDCs. right, lenient rules हैं. तो जो कमिटमेंट इनको करनी है अंडर WTO, वो कमिटमेंट्स भी थोड़ी रिलैक्स्ड हैं, और जो टाइमलाइंस ऑफ कमिटमेंट्स हैं वो भी स्ट्रेच्ड आउट हैं. दे हैव मोर टाइम टू कंप्लाई. इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स लुक एट अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का अग्रीमेंट जो है दैट लुक्स एट फ्री एंड फेयर ट्रेड इन एग्रीकल्चर. It looks at 3 aspects. First is market access. Market access is nothing but national treatment and MFN status. कि आप जो foreign goods हैं, foreign goods once they come to India, you will not differentiate, you will give them equal market access. And between your trading partners also you will not differentiate, you will give them equal access to your market. So market access is the first principle. फॉरेन पार्टनर्स की जहां तक बात है, कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. जब वो गुड्स इंडिया आ जाएंगे, गुड्स में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल. राइट, पहली चीज ये. इट लुक्स एट 1 मार्केट एक्सेस. AOA आल्सो लुक्स एट 2 अदर थिंग्स, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज. कि एक तो आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को किस लेवल का सपोर्ट या सब्सिडी दे रहे हो. इंडिया में हम मान लो MSP देते हैं अपने फार्मर्स को. राइट, MSP मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड टू compete विद इंडियन फार्मर और नॉट. राइट, उन्हें पता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर प्राइस मिलना ही मिलना है. राइट, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सब्सिडी. सॉर्ट ऑफ क्या, दिस इज एन एब्सोल्यूट सब्सिडी. MSP इज अ प्राइस फ्लोर. आपने एक प्राइस फ्लोर उनको इंश्योर कर दिया. राइट, तो आप डोमेस्टिकली अपने फार्मर्स को क्या सपोर्ट देते हो और आप एक्सपोर्ट में कितना सपोर्ट देते हो. लेट्स से आप बोलो फार्मर्स को दैट इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट अनियंस, वी विल गिव यू फर्टिलाइजर्स फॉर फ्री. नाउ दिस विल डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल मार्केट और नॉट. आपने इंटरनेशनल मार्केट में एक जगह पे प्राइस बहुत कम कर दिया प्रोडक्शन का, तो पूरी मार्केट डिस्टॉर्ट होगी, इंटरनेशनल मार्केट. सो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लुक्स एट दीज थिंग्स. सो इट लुक्स एट ए मार्केट एक्सेस. मार्केट एक्सेस में तो वही सेम बात है, दैट मार्केट शुड बी ओपन टू फॉरेन एग्रीकल्चरल गुड्स. यू शुड एनफोर्स MFN प्रिंसिपल एंड नेशनल ट्रीटमेंट. आपने टैरिफ लगाने आप लगाओ, बट एनफोर्स दीज 2 प्रिंसिपल्स. एंड इफ यू वांट टू मेक बैरियर्स टू मार्केट एक्सेस, योर बैरियर्स शुड बी टैरिफाइड. देयर इज अ रीजन फॉर टैरिफिकेशन ऑफ बैरियर्स. नाउ व्हाट डज दिस टर्म मीन? देखो, लेट्स से यू आर एन इंडियन एक्सपोर्टर. सोच के जवाब देना. आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो ऑफ टमेटोज एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट टू EU. विच बैरियर्स वुड यू प्रेफर?
आप क्या चाहोगे कि आपके ऊपर टैरिफ बैरियर लगे या आपके ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर लगे? व्हाट वुड यू वांट? आपको क्या चाहिए इस केस में? ऑफ कोर्स नन का तो ऑप्शन नहीं है ना यार, कोई कह रहा है नन। देखो, अगर आप ध्यान से सोचो, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ टैरिफ बैरियर। It's always better to have a tariff barrier. Why? This is objective. At least now you know what you're competing with. आपको पता तो है आप किस चीज से compete कर रहे हो. Non-tariff barrier is subjective. जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि आप, अगर आपको कहा जाए कि एक ही एग्जाम देना है, या तो प्रीलिम्स देना है या मेंस देना है, तो क्या देना चाहोगे? तो मैं 100% प्रीलिम्स देना चाहूंगा. प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है. प्रीलिम्स में दिख तो रहा है कि गलती हो रही है तो कहां हो रही है. Means is subjective. You don't even know. Non-tariff barriers are subjective. They are subjective barriers. आपको बस कह दिया कि fruit fly infestation है. Tariff है, एक objective standard है, तो at least you know what you are competing with. यहां तो आपको समझ भी नहीं आ रहा, right? अब जहां तक market access की बात है, if we want to have market access, that means Indian exporter should have proper market access to EU. So you have to reduce both non-tariff barriers and tariff barriers. But अगर one of these has to be implied, apply the tariff barrier. Always go for tariff barrier. Non-tariff barriers के पीछे छुपो मत, because यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा ना करना क्या है. यहाँ at least you know what you are competing with. So what is required here is to enforce the MFN principle, to enforce national treatment. There is a need for tarification of barriers. So please convert your non-tariff barriers into tariff barriers. So at least there will be an objective standard to measure against. And anyway, you have committed under principle 2 that there will be reduction of your tariff barriers gradually through negotiation. ये तो आप कमिट कर ही चुके हो. फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन इज प्रिंसिपल नंबर 2. यू ऑलरेडी कमिटेड टू दिस. पहले कन्वर्ट ऑल योर बैरियर्स टू दिस, देन ग्रेजुअली रिड्यूस दिस टैरिफ बैरियर्स. समझ आया? टैरिफिकेशन नीड ऑफ टैरिफिकेशन ऑफ बैरियर्स. ये देखो साकेत मिश्रा, डेवलपिंग कंट्रीज 10% लिमिट, developed countries 5% limit. Please explain, sir. ये वाली लिमिट कह रहे हो क्या? थोड़ा वेट कर लो. एनीवे, हाँ ये बताओ, ये समझ आया? सर देन क्वालिटी वुड रिड्यूस. अरे देखो, इफ देर इज अ करेक्ट नॉन टैरिफ बैरियर, अगर आपने नॉन टैरिफ बैरियर हाइजीन पे लगाया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बेसिकली व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से इज अनजस्टिफाइड यूज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर से बेटर है कि आप टैरिफ बैरियर लगा लो. अगर आपको किसी को रोकना ही है तो स्टॉप यूजिंग टैरिफ बैरियर. इफ यू टू स्टॉप समबडी, यूज दिस बैरियर. दिस इज एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव. दे नो व्हाट दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट. यहां तो इन्हें पता ही नहीं है ना, आप किस बात पे मना करके खड़े हो जाओ. आप नई पॉलिसी बना दो कि जी इंडिया से जो भी गुड्स आएंगे उनको पहले यूरोप के पोर्ट्स में पहले 5 बार उनको खोल के चेक किया जाएगा, फिर उनको देने दिया जाएगा. आपने कोई टैरिफ नहीं लगाया, आपका ट्रेड रुक जाएगा. वुड यू प्रेफर दिस पॉलिसी और वुड यू प्रेफर कि अच्छा 10% टैरिफ है? इसके अगेंस्ट आप फाइट तो कर सकते हो. ये अनजस्टिफाइड यूज मत करो इनका. If you want to put barriers, put them like this. This is the logic. अब समझ आ रहा है? अब now agreement on agriculture, like I told you, agreement on agriculture looks at 3 things. One is your market access.
है ना. एक चीज है डोमेस्टिक सपोर्ट और द अदर थिंग इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज. अब इन दोनों को देखते हैं. डोमेस्टिक सपोर्ट देखो, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन मेनी वेज, राइट. बहुत तरीके से हम सपोर्ट करते हैं अपने फार्मर्स को, वो आज ही हम देखेंगे जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा. देयर आर सब्सिडीज ऑल्सो, देयर आर अदर सपोर्ट्स ऑल्सो. These tend to distort the market. What is the meaning of distort the market? This is demand of wheat. This is supply of wheat. गवर्नमेंट खुद आ जाए wheat प्रोक्योर करने, डिमांड ऑफ wheat would increase. पहले ये तो प्राइवेट डिमांड है. This is what normally you and me want. Government says I will also procure. New demand of wheat will be here. Government plus private. What happens in this case? This was the equilibrium price quantity. Now price becomes here. So from equilibrium price rate has increased. Even the quantity of production has increased. This distorts the market. You are giving some domestic support. What is the domestic support here? Government procurement. Government procurement is the domestic support, right? Second thing you can do. This is market for wheat. You say that I am going to impose a floor price. You imposed a price here. This will be the price of wheat. You imposed a floor price. This is floor. This is not ceiling. I hope ये भूले नहीं हो आप यहां से नीचे नहीं गिरने देते इसको. You imposed a floor price. Now what happens? This is quantity demanded. This is quantity supplied. There is now what? A surplus of wheat in the market. You have again distorted the market or not? ये जो distortion of market है, right? ये जो distortion of market है, this also plays out internationally. ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सिर्फ इंडिया में restricted है. Indian wheat is not only being consumed in India, it is going to everywhere across the world. बाहर से भी wheat India आना है. So whatever actions are taken in India that are distorting the market will also distort international market. ये बात समझ आ रही है? So market distortion, it is not just happening in India, it is also happening abroad. International market distortion is something the WTO wants to stop. So the second idea on agreement on agriculture is that the domestic support that you give to your farmers, to your rural economy, it should not distort the international market. अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, आइडली तो ये भी नहीं होना चाहिए, बट दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल. बट इफ इट डिस्टॉर्ट्स द इंटरनेशनल मार्केट, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. लॉजिक समझ आ रहा है? ब्रॉड लॉजिक समझ आ रहा है? अभी हम डिटेल में देखेंगे यहां पे क्या कहानी है, बट इज द ब्रॉड लॉजिक क्लियर that we don't want that international market should be distorted. ठीक है. अब let me actually just take another break of 2-3 minutes. Yeah, 4 minutes fine. I'll just get my coffee and then we'll continue from here. We'll read agreement on agriculture. From there we will then read Indian agriculture. Agreement on agriculture समझने के बाद इंडिया की प्रोक्योरमेंट, यहां पर एमएसपी की बात होगी अभी, तो फिर एमएसपी क्या होता है, एपीएमसी क्या होता है, ये पढ़ेंगे. एंड फ्रॉम देयर वील डू दैट टेस्ट. ठीक है.
Yeah. Yeah. So what we were seeing was, देखो यार, अगर Indian government gives subsidy to domestic producers, it is going to distort the domestic market. This is still acceptable. But if it goes on to then distort the international market, it goes against the idea of free and fair trade, right? Because international market में India भी एक supplier है, major supplier है agriculture का. तो agreement on agriculture talks on this type of domestic support. कि आप किस टाइप का domestic support दो. You are allowed to support your farmers. The principle here is simple. You support your farmers as much as you want, but give the type of support that would not distort the international market. Ideally, it should not distort your own market also. Give non-market distorting support to your farmers. That is the whole idea of agreement on agriculture. So, domestic support can be categorized into two things, right? It can be categorized into various categories. मैं आपको एक example देता हूँ. देखो, पहले तो सपोर्ट और सब्सिडी को डिफरेंशिएट करते हैं. डोमेस्टिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम. सपोर्ट दैट यू गिव टू योर फार्मर्स, राइट? एक आइडिया ध्यान से सुनना. नेक्स्ट 1 hour, इट विल टेक 1 hour. ठीक है, सॉरी अबाउट दैट. लास्ट टाइम मैंने टाइम पे खत्म कर दिया था, आज मैं टाइम पे खत्म नहीं कर पाऊंगा. इट विल टेक 1 hour, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज माई गारंटी. ठीक है, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर इन द नेक्स्ट 1 hour. बट ध्यान से सुनना यार. ठीक है, लेट्स फोकस. आई नो इट्स ऑलरेडी बीन अ लॉन्ग क्लास. 1 घंटा और बैठते हैं, ध्यान से फोकस करते हैं. सपोर्ट दैट यू गिव टू योर फार्मर्स, इट कैन बी सब्सिडी. पहले तो इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं. सब्सिडी इज समथिंग दैट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सब्सिडी तो हमने ऐसे समझा है, राइट? सॉरी, दिस इज रॉन्ग. दिस is the supply curve. This is right, right? It brings down the minimum cost of production. सब्सिडी तो हमने ऐसे समझा है. सब्सिडी इज समथिंग दैट ब्रिंग्स डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर यू, राइट? सपोर्ट का एक टाइप होता है सब्सिडी. देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट आल्सो. व्हाट आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट? You can give infrastructural support, R&D. You can help in, let's say, some marketing. You can start education campaigns. This will also technically distort the market. ऐसा नहीं है कि ये market बिल्कुल distort नहीं करेगी. इंडिया का infrastructure अगर government better कर देगी, तो it will make supply of Indian agriculture products easier. So it will also distort the market, but this is a good distortion. आप समझ रहे हो ये बात? ये एक अच्छी distortion है. This is a good distortion. This type of distortion is allowed. ये एक तो बहुत minimal distortion है. ये direct आप demand supply को hit नहीं कर रहे, आप factors को hit कर रहे हो. ये तो आप अपनी growth के लिए वैसे भी करोगे. So these type of things are allowed. You want to give support to your farmers, give this type of support. When you give this type of support, your economy also grows and you generally become more competitive, and that's okay. But when you directly hit the demand and supply curves, when you give this type of support, it leads to market distortion, and this is against the idea of free and fair trade. समझ आ रही है ये बात? Is the distinction clear in both these cases? ठीक है, अब देखो, this type of support is allowed, this type of support don't give. तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जस्ट टू सी अगर आपको क्लियर हुआ है या नहीं. एक सपोर्ट है कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिस इज डिमांड ऑफ व्हीट, this is supply of wheat. Government has introduced a floor price. Prices will not be able to fall below this price, and this is minimum support price. In this case, what happens? In this case, quantity demanded is this much, quantity supplied is this much, and there is a surplus
in the Indian market. Now, to deal with this surplus because of this floor price, government says we are also going to procure. So government artificially then inflates the demand and makes it here. Now this is demand of wheat where government is also procuring, government plus private. And this becomes the new equilibrium point. The price of wheat goes higher than equilibrium, quantity supplied of wheat goes higher than equilibrium. एक तो ये टाइप का सपोर्ट है, इससे फार्मर को तो फायदा हो रहा है, फार्मर हैज रिसीव्ड सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस. बट द प्रॉब्लम हियर is it is distorting the market. It is supplying more wheat than would have been supplied in India if the market was free. अगर मार्केट फ्री होती तो इंडिया इतना वीट सप्लाई करता, इतना, this quantity. This is the wheat India would have supplied. Now since the market has distorted, this is the wheat that India would supply. Right? या फिर हम दो अलग लाइंस बना लेते हैं in two different colors. This is without distortion. This is with distortion. So now India is supplying more wheat. So India, if I now look at the international market, supply in the international market has also increased. International market has also gotten distorted. ये एक टाइप का सपोर्ट है. दूसरे टाइप का सपोर्ट देखते हैं. पहले तो एमएसपी की थोड़ी बात कर लेते हैं. एमएसपी आज आपको समझ आ जाएगा. एमएसपी इज अनाउंस्ड. MSP is announced something like this: rupees 2100 per 100 kg of wheat. So more supply, more support. So it is linked to the supply, linked to production. और कोई भी इस टाइप का सपोर्ट होगा, फ्लोर प्राइस आप लगाओगे, राइट, सब्सिडी आप दोगे, तो प्रोडक्शन लिंक्ड ही होगी वो. ऑफ कोर्स इट वुड बी लिंक्ड टू द प्रोडक्शन, राइट. अगर आपने प्राइस लगाया है, वीट का एक प्राइस लगाया, तो पर केजी लिखोगे ना प्राइस को. ऐसा तो नहीं लिख सकते वीट का प्राइस 10 रुपीज है. 10 रुपीज फॉर व्हाट? इट विल ऑलवेज बी प्रोडक्शन लिंक्ड. ये बात समझ आ रही है ना? आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज वन टाइप ऑफ सपोर्ट. सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज गवर्नमेंट सेज वी आर कमिंग अप विद अ स्कीम कॉल्ड पीएम किसान सम्मान निधि. इन पीएम किसान सम्मान निधि व्हाट आर वी डूइंग? इसमें अब हम क्या कर रहे हैं? इन पीएम किसान सम्मान निधि वी आर सेइंग कि देखो यार, एवरी फार्मर इज गोइंग टू गेट 6,000 रुपीज पर ईयर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर, एंड वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग. आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, उस पर यह चीज डिपेंडेंट नहीं है. इफ यू आर फार्मर वी विल गिव यू 6,000 रुपीज पर ईयर. Is this going to distort demand supply curves in any way? Minimal distortion हो सकती है. There can be minimal distortion. You can say that farmer now can invest 6,000 rupees more. But broadly, it is not going to distort this graph. Minimal distortion भूल जाओ. But broadly, it is not going to distort this graph. So this sort of subsidies are allowed. अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की यही कहानी है. यू आर अलाउड टू हैव दीज टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड सब्सिडीज दैट वुड नॉट डिस्टॉर्ट दिस ग्राफ. एंड इवन इफ दे हैव टू डिस्टॉर्ट, दे शुड डिस्टॉर्ट ओनली द डोमेस्टिक मार्केट, नॉट द इंटरनेशनल मार्केट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने एमएसपी अनाउंस किया और अर्जेंटीना में बैठे फार्मर्स भूखे मर गए. समझ रहे हो आप ये कहानी? इफ अर्जेंटीनियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट on export, India gives subsidy to its farmers exporting. India makes the international price crash. Then Argentinian farmers will not get a remunerative price and they will lose out. तो Indian government ने पॉलिसी बनाई और नुकसान किसको हुआ? अर्जेंटीना के फार्मर्स को. This should not happen. Whatever policies you make, don't distort the international market. अगर आपने इंटरनेशनल, अब मान लो इंडिया ने क्या किया है, one of the policies, this I'll teach you in environment also, this is the reason why India is going for biofuels. India has given very high price in MSP for sugarcane. Sugarcane की minimum support price को fair and remunerative price FRP कहते हैं. Sugarcane का FRP बहुत high है. तो क्या होता है? सारे Indian farmers sugarcane उगाते हैं. Now when everyone wants to grow sugarcane, इतनी डिमांड तो है नहीं शुगर की, तो अब वो शुगर एक्सपोर्ट होती है. अब जब वो शुगर एक्सपोर्ट होती है, वी आर फ्लडिंग द मार्केट विद शुगर.
हमने इतनी सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की कर दी है कि शुगर प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रैश्ड। नाउ व्हाट हैपेंस टू ब्राजील में जो फार्मर शुगर केन उगा रहा है, he is not going to get remunerative pricing. So your policies should not distort international market. आप अपनी मार्केट डिस्टॉर्ट भी मत करो, बट अपनी फिर भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट मत करो। तो इस टाइप का सपोर्ट दो, इस टाइप का सपोर्ट मत दो। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट? सो एक्सपोर्ट सब्सिडीज दैट मेक एक्सपोर्ट्स आर्टिफिशियली कंपेटिटिव शुड बी डन अवे विद. So such subsidies should ideally be removed, right? Government can support their agricultural economies, but preferably through policies that do not distort trade. अब इस agreement on agriculture में obviously ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन पे implement हो जाएगा. Everybody will get certain flexibility. यहां पर again fifth principle of WTO is now seen. जो least developing countries हैं उनको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दी है, वो मार्केट डिस्टॉर्ट करना चाहें तो कर सकती है, राइट? दे डोंट हैव एनी बाइंडिंग कमिटमेंट्स. डेवलप्ड कंट्रीज हैव मैक्सिमम कमिटमेंट्स एंड दे हैव टू अचीव देयर कमिटमेंट्स मोस्ट क्विकली. सो डेवलप्ड कंट्रीज को सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, डेवलपिंग समवेयर इन द मिडिल, एंड एलडीसीज हैव द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी. अब ऐसे मत सोचना यहाँ कि फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है और डेवलप्ड में मैक्सिमम, ऐसा नहीं है. नीचे वाला पढ़ना, दिस माइट हैव बीन रिटन इन अ रॉन्ग वे, बट just read what is written at the bottom. Flexibility नहीं है, ये compliance है. Developed have to comply the most, they have the least flexibility. तभी ये highlight कर दिया था just in case you don't get confused. ठीक है? अब कुछ special provisions भी हैं इसमें, but that's okay. Yeah, this is fine. You don't have to read. अब ये हम पढ़ते हैं. Domestic support आप जो देते हो अपने farmers को, that is classified as per this agreement on agriculture. AOA के हिसाब से this is going to be classified into three boxes: amber box, green box, blue box. Amber is close to orange or red, so orange or red is not allowed, green is allowed, blue is exception. blue की बात करेंगे. तो पहले तो सब्सिडी और सपोर्ट में डिफरेंस होता है, हमने देख लिया. सपोर्ट is assistance can be provided in many ways. Subsidy is price level support, reducing the cost of production. Now there are three boxes in the agreement on agriculture. जो भी classification है कि किस टाइप की subsidies allowed हैं, किस टाइप का support allowed है, उसमें there are three boxes. One is amber box subsidies. Amber box. Amber means red. Red means you need to stop this. ठीक है? तो इसमें कौन सी सब्सिडीज आएंगी? ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, इनको रोकना है, राइट? सो सब्सिडीज दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वांटिटीज, क्वांटिटी से जो लिंक्ड हैं, आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, राइट? मेजर्स दैट आर रिलेटेड टू सपोर्ट प्राइसेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है? दीज आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं. दीज आइडियली शुड बी एलिमिनेटेड. ऐसी सब्सिडीज को आइडियली आप एलिमिनेट कर दो. अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसी सब्सिडीज को, इस टाइप की सब्सिडीज को एटलीस्ट रिड्यूस देम टू अ मिनिमम लेवल कॉल्ड डी मिनिमस. डी मिनिमस लेवल, लोएस्ट पॉसिबल लेवल. तो उसमें क्या बोला गया है? Sorry, developed countries will reduce such trade distorting subsidies to 5% of their agricultural production. अगर उनकी agricultural production let's say 1000 rupees की है, value of agricultural produce of let's say USA is 1000 rupees, it will not give subsidy of more than rupees 5. Developing countries, 10% of agricultural production. If India's value of agricultural production is let's say 1000 rupees, India can give maximum such subsidy of 10 rupees. And for least developed countries or least developing countries, no commitment. LDCs के लिए कोई commitment नहीं है, right? जैसे हमने देखा था flexibility. तो developed के लिए काफी stringent conditions हैं, developing के लिए थोड़ी सी flexibility है, LDC के लिए कोई commitment नहीं है, right?
These are the first type of subsidies or amber box subsidies. Second type of subsidies are green box subsidies. Green obviously means go. Green means subsidies that are allowed. Subsidies which do not distort trade or allow for only very minimal distortion. थोड़ी बहुत distortion तो देखो हर policy से होनी है. Minimal distortion of trade, right? These are not targeted at particular products. अब समझना इस बात को. Subsidy given for wheat production targeted at a particular product will always distort trade. Support given to farmer, income support given to farmer in general हम कह रहे हैं फार्मर्स को हम इनकम सपोर्ट दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन को टारगेट नहीं कर रहा. आप कहो व्हीट की प्रोडक्शन में मैं पर 100 kg 2000 रुपए की सब्सिडी दूंगा, दिस विल डिस्टॉर्ट द मार्केट बिकॉज ए इट इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू इट इज कपल्ड टू प्रोडक्शन लेवल, तो इट विल बी डिस्टॉर्टिंग. अगर आपको नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी चाहिए, ऐसी सब्सिडी दो जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल से लिंक ना हो, राइट? These types are allowed without limits. These are allowed without limits. ठीक है. जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में आप रोड्स बना रहे हो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, R&D कर रहे हो फॉर क्वालिटी सीड्स, दीज आर अलाउड विदाउट लिमिट्स. कोई लिमिट नहीं है इनमें बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टॉर्ट ट्रेड, और इवन इफ दे आर गोइंग टू, इट्स गोइंग टू बी वेरी मिनिमल डिस्टॉर्शन. एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स समझ आया, फिर ब्लू बॉक्स पे जाते हैं. ठीक है, अब लेट्स गो टू ब्लू बॉक्स. देखो, सब्सिडी तो दो ही तरह की हो सकती है. सब्सिडी एंड सपोर्ट कैन ओनली बी ऑफ टू टाइप्स, डिस्टॉर्टिंग या नॉन डिस्टॉर्टिंग. तीसरा कहां से आया फिर? बाय ब्लू बॉक्स इज देयर. देयर आर सम सब्सिडीज वेयर इट कैन नॉट बी डिसाइडेड. आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या ये डिस्टॉर्ट करेंगी या ये डिस्टॉर्ट नहीं करेंगी. एग्जाम्पल देता हूं आपको इसका, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. इन द यूएस, in this part of USA, there is huge maize production, maize and corn production. Corn और maize तो सेम चीज होगी, maize and cotton production actually. These are also the states, including Texas, where there was lots of slavery. Why? Because they were actually, world history when you read you will understand this. These are the states which were very highly agriculturally productive, and they had cotton and maize production that actually required human intervention. These northern states, यहाँ पर जो states हैं, this is Pennsylvania, New Hampshire, New York, New Jersey, Wisconsin, Michigan, right? These states, ये जो यहाँ पर ये जो states हैं, they became mechanized earlier. So they in their fields, these people started using machines. बट ये जो यहाँ के स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स, टेक्सास, यूटा, फ्लोरिडा, राइट, दीज स्टेट्स, नेब्रास्का, ये जो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, they did not become mechanized this quickly. They were still using slaves. So they want to emancipate the slaves. Why? Everything is economics. क्यों फ्री करना चाहते हैं slaves को? Because now they have mechanized production and now they need a demand for their produce. They think that if slaves are freed, यहां पर क्या होगा? Their supply will crash, and this is why the war is fought. Between whom? Who fights the war here? There is General, ये नहीं पता होगा आपको, there is General Lee on this side. Who is fighting from the north? Who actually wins? Who then ultimately frees the slaves? North से कौन लड़ रहा है? बताओ. एब्राहम लिंकन. गुड.
And what is this group of states called? Second question. इनका flag कुछ ऐसा दिखता है. This group of states that are fighting to protect slavery, they have a flag like this. What is this group of states called? Abraham Lincoln is correct. What is this group of states called? ये जो slavery protect करने को लड़ रहे हैं, Confederate states. Very good. These are the Confederacy, the Confederate states. Anyway, this is world history. Just one small, reference. Anyway, अब यहां बात करते हैं. यहां क्या हो रहा है? This area has huge productivity. ठीक है. अब if all the maize farmers in this region, अब ध्यान से सुनना, blue box समझना है तो, if US government allows all the maize farmers in this region, case 1, US government allows all maize farmers in this region to grow maize. सबको allowed है, जिसने grow करना है करो. There will be so much production of maize in the world that prices will crash. Because average farm size here is 100 acres. Average farm size, average. So you can imagine the level of production these people can do. They can effectively double the supply of maize today if they want. Second scenario, which is the actual case. US government does not want maize to crash, maize prices to crash. So US government says that all farmers here, if this is your field, you leave 50% of your field fallow. Fallow means you don't cultivate on 50% of your field, you only cultivate on 50%. For whatever you will leave fallow, जो आप खाली छोड़ोगे, उस खाली छोड़ने को we will give you some compensation. So please don't grow maize. We will give you some compensation, effectively support or subsidy for leaving this fallow. Only grow half. Government ये क्यों कह रही है, US government, that if you grow only this much, then the international maize prices will not crash. And at least international maize prices will be maintained at a certain level. All across the world, the farmers from all the countries, they will be able to get benefit of maize prices. अब ये जो compensation दी जा रही है, समझ गए ना दोनों सिनेरियो? पहला सिनेरियो सबको अलाउ कर दिया, मेज की सप्लाई डबल ट्रिपल हो गई, मेज के प्राइसेस क्रैश कर गए. सेकंड, यहां पर बोला कि आधा लैंड आप खाली छोड़ दो अपना, हम आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन देंगे ताकि इंटरनेशनली मेज प्राइसेस क्रैश ना करें और सारे फार्मर्स डिस्ट्रेस में ना जाएं. नाउ दिस सब्सिडी इज मार्केट डिस्टॉर्टिंग और नॉन डिस्टॉर्टिंग? क्या लगता है आपको? देखो, on the one side you can make the argument that if these farmers who have been given this compensation, ये जो बाकी मेज उगाएंगे, एक तो इनका आधा फील्ड हमेशा बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगा. फर्स्ट ईयर दे विल ग्रो हियर, सेकंड ईयर दे विल ग्रो हियर, थर्ड ईयर दे विल ग्रो हियर, फोर्थ दे विल ग्रो हियर. सो दे विल गेट एडवांस फर्टिलिटी. लैंड खाली छोड़ने से न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर तो होते ही हैं. सेकंड, दे ऑलरेडी हैव कॉम्पेंसेशन, तो बाकी जगह दे कैन सप्लाई द मेज एट लोअर प्राइसेस. इनको तो ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन मिल चुकी. बट यू कैन ऑल्सो मेक द आर्गुमेंट दैट इफ दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट गिवन, the entire market would crash. So now nobody can say whether this is market distorting or not distorting. These are the type of subsidies that are put in blue box. Blue box is amber box with certain conditions. Conditions that are designed to reduce distortions. Technically this subsidy that is being given, ये जो सब्सिडी दी जा रही है कि लैंड फैलो रखो, प्रोडक्शन कम करो, ये मार्केट डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए दी जा रही है. सो दिस इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी. यू कांट डिसाइड कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है या नहीं है, राइट? बट एटलीस्ट द इंटेंट इज टू रिड्यूस डिस्टॉर्शंस. These subsidies are also allowed with no limit. So amber box, there is limit for developed countries of 5%.
of developing countries of 10%. Green box fully allowed. Blue box we can't decide yet कि ये distorting है या non distorting है, and they are also allowed with no limit, but there is a condition that they should be at least made with the intent of reducing distortion. जैसे इस सब्सिडी को देख के आप कह सकते हो कि एटलीस्ट इंटेंट तो यही है कि डिस्टॉर्शन रिड्यूस करने के लिए बनाई गई, राइट? इज ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स क्लियर? एक बार अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की एक क्विक समरी देख लेते हैं. लेट्स लुक एट अ क्विक समरी ऑफ द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात यहां पर क्या की जा रही है? व्हाट इज बीइंग सेड इन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? इट इज बीइंग सेड that one, market access will be fully allowed. For market access there are two types of things, national treatment and MFN status. वो चीज आप fully allow करो. Don't use non-tariff barriers to stop these principles. If you want to put barriers, put tariff barriers, have tarification of barriers, but agree to these principles. Don't misuse non-tariff barriers. सेकेंड थिंग इज एक्सपोर्ट बेस्ड सब्सिडीज. अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किसी को सब्सिडीज दे रहे हो, दीज नीड टू बी एलिमिनेटेड. थर्ड इज डोमेस्टिक सपोर्ट. डोमेस्टिक सपोर्ट इट इज सेइंग इट इज क्लासिफाइड इनटू 3. कलर भी जान के मैं वही यूज कर रहा हूं. एम्बर. एम्बर इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. दिस इज नॉट ओके. यू नीड टू स्टॉप हियर. आपको स्टॉप करना है. यू नीड टू ब्रिंग दिस टू डी मिनिमस लिमिट्स. क्या लिमिट्स हैं वो? 10% फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, 5% for developed country. ठीक. अब second type is green box. Green means go. These are non-trade distorting subsidies. These are allowed without limit. जितनी आपने green box की subsidies देनी है दो. Last is blue box. Blue box में you don't know. You don't know whether they are actually trade distorting or not. But yes, they are allowed without limits. The intent should be that we are trying to reduce distortion, but the thing is we actually can't decide. They can't be put in a proper category yet. Agreement on agriculture is clear. Of course, this is a good argument that developed countries have a much larger total production. तो 5% मिला के भी हो सकता है उनकी सब्सिडीज ज्यादा हो जाए. That is why this is not agreed. अब इसमें हुआ क्या? इंडिया हैज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अभी वही पढ़ने वाले हम नेक्स्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज देयर इन इंडिया. अब ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट वाज सीन इन 2013 दैट इट इज गोइंग टू ब्रीच द डी मिनिमस लिमिट. इंडिया अपनी लिमिट्स को ब्रीच करने वाला है. सो वी नेगोशिएटेड and we got something called a peace clause. Peace clause was that no country will go after India in WTO. India will be allowed to stay at peace for next 4 years. 4 साल के लिए इंडिया को peace allowed होगी, even though India is breaching the de minimis limit every year. Year after year we are breaching the de minimis limit as far as food subsidy is considered. But India को ये allowed होगा. क्यों allowed होगा? Because we have our domestic compulsions, etc. We negotiated this peace clause for 4 years. Then this was negotiated in 2012. In 2016, it was about to expire. In 2015, we said one more thing. So, in 2015, our new Honorable Prime Minister Modi ji negotiated with Honorable President of USA Barack Obama, and he was able to get this extended indefinitely. This was a major achievement. So now the peace clause reads that pending normalization of India's food security program, India will have a peace clause. So we can continue to breach this, India specifically can continue to breach this de minimis limit for as long as we want, because we have this peace clause.
and access to the peace clause, meaning that we will not be specifically scrutinized because of our large A, domestic production, and B, large population that we have to feed. समझ आया पीस क्लॉज का लॉजिक? पीस क्लॉज लॉजिक इज क्लियर? And we don't have to go into whether urea subsidy is going to distort the market or not. ठीक है, देखो अभी मैं आपको एक्चुअली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट डू द टेस्ट नाउ, तो आपको समझ आ जाएगा. देखो बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच डिटेल वी कैन गो इनटू दिस, है ना. अभी आप अगर टेस्ट दोगे आपको अभी समझ आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, लेट्स डू द टेस्ट फर्स्ट. एनीवे इट्स अप्रोक्सीमेटली 3 hours. टेस्ट विल आल्सो टेक हाफ एन आवर. And I wanted to start with agriculture today, but I think we can start on Saturday. पहले हम टेस्ट कर लेते हैं. Let's first do the test. It's a test of 14 questions. So we'll do the test now, and let me just load the test. Test is 14 questions. So that means maximum marks you can get are 28. Cutoff is 24. If you are getting less than 24, then we are very close to the prelims. Less than 24 is unacceptable score. ठीक है, अनएक्सेप्टेबल. मैं एक बार वीडियो ऑफ कर रहा हूं ताकि आई कैन जस्ट लोड द टेस्ट, फिर टेस्ट स्टार्ट करेंगे. चलिए, आई होप यू आर all ready for the test. The test is on your screen. All the best. I'm starting the test now. Chat is private and no hints from my side. Start. जान के कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन में, हो कंफ्यूज. I will explain this question after we're done with this. I will not give you 1 minute for. अब देखो किस बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं.
But since they have appeared in PYQs, हमें उसका background पता होना चाहिए. All right. 30 seconds for this also. Question 4. Giving you 30 seconds because in questions में ज़्यादा चाहिए नहीं. Again, 30 seconds is fine. All right. Nine हो गया क्या? Have we done 9? You've done 8 right now, right? I want to see how you don't skip this question. मैं चाहता हूं आप सब ट्राई करो. I want to see how you think in this question.
आई नो हमने नहीं पढ़ा है, रिपीट भी नहीं होगा, बट स्टिल दिस इज इजी. This depends on whether you studied that banking comparison table that I gave you in the last class of economy. आपने वो पढ़ा है या नहीं, अभी उस पर डिपेंड करता है. Last question. चल एक बार आंसर्स देख लो. Look at the answers. I'll write the other ones here just in case they're not visible. This is
You can check. चलो अब देखते हैं जरा एक बार. Let's take a look. All right. Ab, see this was something that had to be done through logic. मैं एक बार chat off करता हूँ पहले. This was something that had to be done through logic. Rapid financing instrument and rapid credit facility. We know what is the role of the World Bank. We know what is the role of the IMF. It makes most sense that IMF would be correct here. Again, this, I have not taught you this deliberately so that you are able to place this. क्योंकि देखो मैंने ये प्रीलिम्स दिया है, ये मेरे प्रीलिम्स में एक्चुअली मेरे सेट में ये पहला क्वेश्चन था. तब किसी भी बुक में ये दोनों वर्ड्स नहीं लिखे थे. तब वहां लॉजिक लगाना था कि यार विच ऑफ दीज वुड गिव अ रैपिड क्रेडिट, राइट? क्यों देगा कोई यहाँ पे रैपिड क्रेडिट? व्हाई वुड यू रिक्वायर रैपिड क्रेडिट? You would require rapid credit in the case of a balance of payments crisis. Why else do you need credit rapidly? Right? तो यहाँ पर ये लॉजिक लगाना था. I hope you were able to apply that. अब यहाँ भी, here also I deliberately did not teach you what was written in the third statement. मैं आपको अगर अभी नोट्स दिखाऊं तो ट्रिम्स में ये चीज लिखी हुई है. If you go to the notes, you will see that in trims, the thing that is there in the answer is written. Right? FDI policies के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. FDI and trade policies के बारे में लिखा है. But I did not teach you this. I deliberately skipped this part. Why? Because I wanted you to apply your brain here. India is TRIMS compliant. India completely agrees with TRIMS and India's policies are also TRIMS compliant. We have already regulated foreign investment or not? कि अच्छा बैंकिंग सेक्टर में 49% FDI, डिफेंस में 74% FDI, 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर. ये जब चीजें हमने कर ली हैं, when we have done these things, clearly we have regulated foreign investment. But we are still TRIMS compliant. तो TRIMS का मेन पर्पस क्या समझ आया हमें? You cannot prefer domestic firms. You can't say that we will buy and 50% local content must be there, 100% domestic manufacturing must be there, but you can regulate how much foreign investment you want. ये तो आपका राइट है. ये तो आपका राइट है ना कि आप 100% FDI चाहते हो, 49% चाहते हो, 74% चाहते हो, नहीं चाहते किसी सेक्टर में FDI. जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप बोलते हो कि द होल्डिंग कैन नॉट बी मोर देन 20%, राइट? तो ट्रिम्स में फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड. आप इंपोर्ट पे एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. ये चीज हमने देखी थी. इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड, नहीं, सर्विसेज तो नहीं होगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू GATT. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. इट इज नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. FDI वगैरह कितना आता है उस पर कंसर्न नहीं है इसका. इसका कंसर्न है कि इन्वेस्टमेंट होने के बाद यू डू नेशनल ट्रीटमेंट. देयरफॉर 1 and 3 इज करेक्ट. ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर? Again, wanted to see if you guys would be able to apply your minds here or not. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट? अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये WTO से रिलेटेड है. फोर्थ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये WTO से रिलेटेड है. बट आई वांट टू शो यू अ ट्रेंड हियर. विच ईयर वाज दिस आस्क्ड इन? 2015. ये 2016. ये देखो फिर 2016. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है. ठीक है, कब पूछा जा रहा है ये? दिस इज ऑल बीइंग आस्क्ड इन 2016 and 15. बट जब
2020 में 4-5 साल बाद ये क्वेश्चंस आते हैं, 2022 में आते हैं, तो दे आर ऑफ अ हायर लेवल। अब आपको इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। इफ दिस हैज टू बी रिपीटेड एवर, इफ दिस हैज टू बी रिपीटेड, इट विल बी आस्क्ड इन डिटेल, राइट? अगर अब ये पूछा जाएगा तो डिटेल में पूछा जाएगा, राइट? एनीवे थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन 2015, इफ एवर दे विल गेट रिपीटेड, आप ये पैटर्न देख लेना, डिटेल में रिपीट होंगी। तो 2015 में ये सेम चीज पूछी थी, तभी हमने ये डिटेल में पढ़ा है, एसपीएस और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, डिटेल में पढ़ा है। Ease of doing business, now we didn't read this in detail. Why? Because this ranking has been stopped, but we read World Bank in detail, right? Ab global economic prospects, global economic prospects report is also of World Bank. Again you see 2015, ये 15-16 में रिपोर्ट्स पूछने की बहुत आदत थी, अब नहीं पूछ रहे वो रिपोर्ट्स इतनी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2016 IMF, this was one year when I think it was 16 or 17, I don't recall, जब कट ऑफ शायद 112-15 था, because of these type of questions. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, we already know it's IMF, right? But देखो 2014-15 के बाद अब नहीं पूछ रहे ऐसे क्वेश्चन। Which one of the following currencies has been proposed to be added to basket of IMF's SDR? उस टाइम पे ऐड हुआ था। Now if you know renminbi is in the basket, it was added at that time. अब 5 करेंसीज हैं, कौन कौन सी? डॉलर, यूरो, येन, पाउंड एंड रेनमीबी। These 5 currencies are there. अब ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी देख लेते हैं पहले। 11th, गोल्ड ट्रांच, नॉट समथिंग दैट वी नीड टू नो, ये तो आप पढ़ ही चुके हो आप, राइट? सो यू नो इट इज व्हाट इट इज, आरटीपी इज 1/4 ऑफ द कोटा एंड WTO एक्सेट्रा। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने वो बैंकिंग कंपैरिजन टेबल पढ़ा था, then you would have gotten it right, otherwise you would not get it right। या फिर आपने कहीं और से IR पढ़ा हो, या आपने जैसे वरुण सर ने आपको पढ़ा दिया हो तो अलग बात है, आप बच जाओगे, राइट? इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, या मुझे चैट में बताओगे अभी। एंड इट डज हैव मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, दिस इज करेक्ट। कौन है लार्जेस्ट शेयर होल्डर AIIB में, और इंडिया की शेयर होल्डिंग कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। दोनों चीजें लिखी थी उस बैंकिंग कंपैरिजन के टेबल में, हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड इंडिया की शेयर होल्डिंग कौन से नंबर पे है, दोनों बात बता दो। Can you guys not hear? I think thoda some connection error is there. Can you hear now? I cannot see your chat at all. One second. Yeah, now it's fine. China has largest share, India is second largest shareholder. Good. Good. Last question, last 2 questions. New Development Bank has been set up by, ये भी आपको पता होगा, it's a BRICS initiative, right? Headquarters in Shanghai, this is correct. And lastly, India is member of all 3. India is member of all 3. अब एक ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2016 में था। So as you can see 2015-16 were favorite years for IMF and World Bank। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो, IMFC, International Monetary and Financial Committee, discusses matters of concern affecting global economy and advises the IMF on direction of its work। देखो, obviously वैसे तो factual चीज है, but what are the 2 main jobs of the IMF? पहले आप मुझे बताओ, मेन जॉब्स ऑफ IMF क्या हैं? हमने देखा था ना, 2 मेन जॉब्स ऑफ द IMF। ग्लोबल इकोनॉमी की 2, हाँ, वेरी गुड मयूर, सर्वेलेंस एंड हेल्प, 2 ही काम है। 1 इज सर्वेलेंस एंड 1 इज हेल्प।
सेकेंडली सर्वेलेंस एंड हेल्प, यार सर्वेलेंस एंड हेल्प, डेवलपमेंट काम नहीं है वर्ल्ड IMF का, राइट? टू बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक you have to be member of IMF. This also you know. If surveillance and monitoring is a job, अब अगर आप ये बात ध्यान में रखो कि surveillance and monitoring of the global economy is something that the IMF is supposed to do, then does this statement appear correct? Second, to become member of World Bank you must become member of IMF, then does this statement appear to be correct? मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप सॉल्व कर लेना चाहिए. My ideal response, if you've not heard this before, ideal response would be to skip. But what I'm trying to teach you is lateral application of knowledge, right? कि आपको कुछ चीजें पता हैं, उससे you can interpret whether these things are correct or not, right? समझ आ रहा है what I'm trying to say? आप skip करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, but are you able to understand what I'm saying? You know surveillance is their main job, you know World Bank के साथ linkage है. उसके बाद भी अब देखो, now I'm going to tell you something really important and this is where I'll end today's class. Agriculture हम next time start करते हैं. देखो, when you are going to be in that prelims paper environment and you can take this advice to the bank, even now when you are going to do your test series, you are going to attend your full length test, use this principle. ठीक है? पहली बात तो doing the paper in 3 rounds, this is absolutely a bad strategy. इससे कुछ फायदा नहीं होना. ठीक है? Always attempt the paper in 2 rounds. Why? पहली बात तो in the first round take decisions on everything. लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगा जो मुझे बिल्कुल पक्का से आते हैं. क्यों? कहां लिखा है ये? सेकेंड राउंड में कोई और अंकल आएंगे क्वेश्चन करने के लिए? आपने ही करने हैं ना सारे. आपकी नॉलेज इंक्रीज तो होनी जाएगी उस 1 घंटे में. एट बेस्ट यू कैन गेट सम अश्योरेंस. यही हो सकता है ना. तो पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करते हैं. ये तो चाहिए ही. दिस वी डोंट वांट. ठीक है? अब यहां पर क्या करना है? व्हाट आर यू सपोज टू डू इन द फर्स्ट राउंड? इन द फर्स्ट राउंड टेक डिसीजंस. व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन, एक तो है आपको 100% आता है, मार्क इट देन एंड देयर. एक है यू आर कंफ्यूज्ड इन 50-50 ऑप्शंस, एटलीस्ट उस क्वेश्चन पे लिख लो 50-50. वहीं पे लिख लो 50-50. लेट्स से यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी, तो अपने क्वेश्चन पेपर पे बाकी दोनों ऑप्शंस पे क्रॉस लगा लो कि वंस यू कम बैक यू विल ओनली कंसिडर ए एंड सी. एक और बहुत हेल्पफुल हिंट दे रहा हूं. लेट्स से यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी एंड योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट is that A is correct. Your first instinct is usually right. Don't change your first instinct in these cases. करके देख लेना ये. First instinct is usually right. Anyway, third can be that you can eliminate one option. 33% श्योर हो आप, तो उस ऑप्शन के सामने क्रॉस लगा के छोड़ दो. ये सब कुछ आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हो. एंड लास्ट इज दैट यू डोंट नो एनीथिंग, देन जस्ट राइट स्किप or put a big cross on the number of that question and you know you are going to skip it. Don't read it again. पहले राउंड में आप ये डिस्टेंस लोगे. सेकेंड राउंड में, in the second round you are only going to solve this. That's it, right? ये ऐसे ही होगा पेपर सॉल्व. अब why am I then classifying it into 2 rounds? ये है एक inherent risk factor. यहां पर एक इनहेरेंट रिस्क है. आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए. आई कैन से राइट नाउ विदाउट इवन सीइंग द पेपर दैट इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन हैपनिंग ओवर द पास्ट 20 years, राइट, जिस हिसाब से चल रहा है यूपीएससी में, आई कैन से राइट नाउ दैट द कट ऑफ वुड बी डेफिनेटली लेस देन 100. 100 से तो कम होगा ही, 90 से थोड़ा कम, 90 से थोड़ा ज्यादा, राइट. अब आप देखो, आफ्टर योर फर्स्ट राउंड इज डन, after your first round is done, what scenario would you be in?
एंड दिस इज समथिंग आई हैव एक्चुअली प्रैक्टिकली डन इन द एग्जाम हॉल, इसलिए बता रहा हूं. फर्स्ट राउंड के बाद यू वुड हैव मार्क्ड ऑल क्वेश्चंस दैट आर 100% करेक्ट एज पर यू. इसमें भी आप सिली मिस्टेक्स करोगे, सब करते हैं, मैंने भी करी है, बट आपकी ओएमआर शीट में ये सारे क्वेश्चंस मार्क्ड होंगे. एंड व्हेन आई से मार्क हियर आई मीन बबल इन द ओएमआर. देन ये चीज हो गई. सेकेंड थिंग, you will know how many questions you are marked at 50-50 or 33%, and you will also have marked skip questions. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद spend 2 minutes, just spend 2 minutes and count how many bubbles are there in your OMR sheet. आपकी OMR पे भी कौन से bubbles हैं, यही वाले bubbles हैं ना. Just spend 2 minutes and count the bubbles on your OMR sheet. If these bubbles are in a range that is less than 30, what does that mean? That now you need to take risk. That means all of these questions will now get attempted. If they are in the range of more than 45, that means now you need to minimize your risk. If they are in between this range, somewhere here, in this range, between 30 to 45, then you need to assess further कि अच्छा पेपर कितना डिफिकल्ट लग रहा है. Spend 2 minutes doing that in the exam hall. कुछ नहीं होगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट लग रहा है. अगर मान लो 45 के क्लोज है, 44, 43 है, तो आई विल ओनली अटेम्प्ट 50-50 वंस. अगर 30 के साइड पे ज्यादा है, 32, 33 है, तो सारे अटेम्प्ट होंगे. समझ रहे हो? सो यू विल मेक रियल टाइम डिसीजंस ऑन व्हाट योर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी हैज टू बी. तो पहले से, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्किंग दिस, पहले से ये कोई नहीं पूछेगा कि सर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट. ये अभी बता रहा हूं आपको, अपने टेस्ट में करके देखो. प्रैक्टिस दिस नाउ सो दैट यू कैन अप्लाई दिस एट द टाइम ऑफ योर टेस्ट. ठीक है? एक तो पहले से ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सर कितने क्वेश्चंस करने, राइट, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड. वी विल फॉलो दिस पैटर्न, एंड इन द टेस्ट एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स वी विल यूज दिस टू एंश्योर कि हमारी मैक्सिमम आउटकम निकले. नाउ आई टोल्ड यू आई हैव डन दिस माई सेल्फ, तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता देता हूं. आई डिड दिस इन 2022. 2021 में तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2022 में समझ आ गई थी. 2022 में ये प्रोसेस करने के बाद द नंबर ऑफ OMR बबल्स आई हैड वाज 44. एंड इसमें क्या हुआ था, मैंने एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मार्क नहीं किया था, मेटावर्स वाला क्वेश्चन या कोई ऐसा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज वाला क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किया था, मुझे वो आता था. सो इट बिकेम 45. So I knew that as per me at least I have done 45 questions correctly. Silly mistakes हुई, इन 45 में से 42 ही करेक्ट थे अल्टीमेटली. बट 84 मार्क्स तो है ही ना मेरे सामने अभी. 84 मार्क्स आर राइट देयर. 84 तो सामने है. इसका मतलब अब आई नीड टू टेक लेस रिस्क. तो मैंने फिर मेजरली 50-50 वाले ही अटेम्प्ट किए, मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया. आई स्टिल गॉट थ्रू विद अ वेरी गुड स्कोर, गॉट थ्रू विद फॉरेस्ट कट ऑफ आल्सो. ठीक है? सो प्लीज टेक दिस लेसन टू हार्ट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. प्रोसेस समझ आइए. इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको IMFC वाला दिखा रहा था. नाउ यू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दिस वेदर IMFC क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड और नॉट. वेयर टू मार्क इन OMR? बबल इन OMR आ रहा. कहां मार्क करोगे OMR में? बबल करो OMR में. ठीक है? चलो, अब आई विल सी यू ऑन सैटरडे. See you on Saturday. Bye-bye.